you can see my video, let in the chat box. Good evening, good evening, good evening. And welcome to the Ultimate Sales Engine 2023 edition. I'm thrilled to have each one of you in this training program. You know what? Your presence to this training program signifies something. It signifies your commitment, your passion, your junoon, your hunger towards what? Learning, growth, and also achieving the sales excellence. So welcome, welcome, welcome. If you ask business owners, entrepreneurs, individuals, what do you want? They will give you a list of aspirational things. They will give you that they would like to have what? They would like to have cash flow. They would like to have more money, passive income. They would want their team to perform like entrepreneurs. So the list is very long, but the dark reality is a vast majority of entrepreneurs, business owners, they don't take a single action to achieve these aspirations. Would you agree with that? Now, guess what? They live in a world of hesitation, procrastination, all self-doubt, confusion, but they are not going to take any action. But you people belong to a different breed of people. You are unique, you are different, you are special, you know that. So congratulations to each one of you for stepping up for your business. So welcome once again. And I want all of you to type in chat box your name to receive this congratulations, and also write congratulations as a word to welcome all other people. I'll tell you why. Individually, you and I can't do anything. What we need is a group dynamics, and that's what you are going to get here. Is it making sense? So group की energy के साथ हम ये magic create करने वाले हैं. Okay. Now, thank you. So now, this is going to be a 7-week intensive training program. 7-week intensive training program, and in this training program, you are going to learn how to build a well-oiled sales engine, which promises you to have more customers, more clients, more sales, more donation, more patients, ultimately more income. And you are also going to discover ultra advanced sales techniques and persuasion strategies with which you would be able to revolutionize the way you do sales. Your team would be able to change everything in your sales and get more business. And eventually you will have what? You can experience ROI of your marketing for the first time. ROI in terms of money, ROI in terms of effort, ROI in terms of the time you spend, you are going to get that. So these are the things which I have in mind for you. Now, I want to get this clear to you in the beginning, and you need to understand this. And once you understand, you can let me in the chat box. The way customer buys today has changed completely. The way they say yes to a product or service or an email or an idea has changed completely. The sales landscape is completely dynamic and evolving very fast, very fast. Now, I want you to understand this. What worked in past is not going to work now. The Google Sheet, the hacks, the tools, those things which are given to you in the name of advanced strategies is not going to work. What you need is a cutting edge sales methods and framework which is built on customer psychology, with which you would be able to have predictable and consistent sales for your business, and you can grow as you want to grow. So that is the whole intention I have for all of you for this program. Now, this delivery, this thing which I have for you cannot happen if you don't have open mind, if you don't have curious mind. What I want you to do is, I want you to help me help you transform. Okay. Now I'll tell you what. If you come with an evaluator's mind, what is going to happen is you are going to just do the fault finding in this whole training program. Okay. But if you come as a student's mind, you are going to not only love the content, but you're going to transform your life.
and you have paid the money and you have signed up as a student, not as an evaluator. Would you agree with that? What you don't know is that my family, my teachers, my mentors, my ex-students, my past students, all of them are in this class, and they are here as an evaluator's hat. They are going to report to me what was great, what needs improvement, all those things. So you don't worry about those things. You focus on what? You focus on, as a student, absorb as much as you can, watch the recording, absorb again, and get in the transformation journey. So that is a deal I want to have from you. Can I expect that deal, ladies and gentlemen? Wonderful, wonderful, wonderful. Now, how would you know that your student hat has been switched to evaluator's hat? How would you know that? The moment, for the first time, maybe in this class or maybe in any of the session, the moment for the first time you have this idea in your head that when this guy is going to come on the sales content, when this guy is going to stop talking like this, and he is going to give me those hacks, those things which I've been looking for. So that's the moment you have to be mindful. You have to calm down, and you have to allow Dr. Akshar to transform your life, do the required intervention and surgery. Is it making sense to you? So be mindful about switching from student to a judge. And I'm telling you, I have taught to thousands of students, thousands of business owners, so I know by experience. It is not something randomly I'm saying as a part of whatever I want to say. Okay, good. If that's a deal and understanding, so what I want to tell you this is how this program, Ultimate Sales Engine, came into existence. So before COVID, what happened was I had only one program called Get Overbooked. And Get Overbooked is one of the most comprehensive marketing programs you can ever have in your life. It can solve almost all marketing and sales challenges you will ever have. And students who have done this, they call it as a Bhagavad Gita of marketing. That was the main program. At that point in time, there was no Ultimate Sales Engine. Now, when COVID happened, I was running a campaign for Get Overbooked. And I saw low response, very lukewarm response. And I got curious. As a marketer, I teach also the same philosophy. When you get a good result or a bad result from your marketing campaigns, you don't get excited, you don't get sad, you get curious. So I got curious and I went to all of my students, called them approximately 200 students. And I wanted to understand what is happening in their mental space, why there is a lukewarm response from the market. And I've got to know that during COVID, they are not interested in learning these big marketing courses. They're looking for fast cash flows, how to have fast cash flow, how to have quick sales, because they cannot meet because of COVID restrictions. So how do we convince, how do we sell through internet or through Zoom? So what I did was I wrote all the challenges which my students and the market gave it to me. And then I came back to my drawing board, looked at the Get Overbooked 13 things which we teach. And I said, okay, ये सारी problem है, इन सारी problem को ये 13 things solve कैसे कर सकता है? And I looked at all the problems and found there are two potent P's. One is called MCB, second is called 4-phase, which you are going to learn in this program. Two potent P's I took out from Get Overbooked and created a complete program called Ultimate Sales Engine. May 10th, 2020, 10 a.m. Sunday, we ran the first promotional webinar for Ultimate Sales Engine. And many of the students are here from the same batch also to recap and revise. We got 45 students on that day for Ultimate Sales Engine first batch. 3 years fast forward, today we have got 1,350 people for the Ultimate Sales Engine program, fully paid for this. And my students, those who have done USC and Go, they have reported close to 600 crores plus of additional sales for their businesses. And you know what? My own business, my own company has grown 400% in last year itself. And this year we are going to make it more than this. Now, I'm not telling you these things
to impress you about myself, about my capabilities. I'm telling you to impress upon you that these principle works. If you apply to the fullest, it is going to give you similar or bigger results as it has given to hundreds and thousands of entrepreneurs and business owners. These principle works in government business, or you are a homemaker, want to start your freelancing business, or you are 25,000 crore rupees man, you are going to get value from this framework. So if you are ready, I'm ready to get started. Let me in the chat box if you are ready. So we are going to I will pull up my presentation and we'll be switching off my video in a moment. So, before I move forward, I want to welcome to few people. So welcome to the returning champions of the USC and Go graduates. Welcome everyone. Welcome. So you already know the value of this program and you have done your best. This time, I would want you to multiply your learning and gain the maximum from this. So here is to your successful journey together. God bless you. Do your best. And big hand to my team who has made this event, the backend thing made possible. It is not easy to handle 1,400 people's WhatsApp query, SMS query. Some people are sending email to me directly, WhatsApp to me directly, and then sending to my team also. So it's crazy, but we are able to handle it. So guys, welcome back and congratulations. Let's do it. Everyone, if you are ready, so let's begin. Let's begin the one of the finest transformative program, which is going to revolutionize. All right, let's talk. Now, we are going to begin today's session with an exercise. And I want to tell you beforehand, everything which I am going to do or share or ask you to do has a purpose. सिर्फ मैं कोई बातों करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ. Everything has a purpose. I will be asking you to write some answers. I will be asking you to chat something in the chat box. I will be asking you to dance, whatever it is. The only purpose would be to transform you. Yeah. So we are going to begin with an exercise. And before that, I want to share a sharing by a gentleman who is a great student of Ultimate Sales Engine. He came last year. His name is Gopal Rathi. I don't know how many of you know him. Gopal Rathi. He is the director of Sri Rathi Steel Limited. And like you, he came last year in the month of September. This is what he had to say. And this is a very important point you need to understand. In the beginning, I found Akshar Sir's teaching style bit unusual or weird. Now, why this is important for you to understand is, if you want to grow, then you have to learn to do weird things. You cannot grow in your comfort zone, in your shell. You need to break that comfort zone and come out of it and do the weird things to grow. Is making sense? Then he continues, but as I stayed committed and embraced it, I discovered that beneath that weirdness, there was a pure gold. Is making sense, guys? Yeah. So this is what he has to say. And then Puneet Agarwal from CJ Dasal, one of his promoter of CJ Dasal, what he has to say is this. And an interesting thing about Akshar's sales science is that his science works very well, not only in business, but in life also. Now, here's the point. Let me ask you this question. Example के लिए, अगर आपने English बोलना सीखा या English लिखना सीखा, is it applicable only to your business or it is also applicable to your personal life also? It is applicable to both places. Yes or no? Yeah. So what I'm trying to say, anything which you learn, which has got timelessness and universal principles, that applies across all the areas of your life. It is not limited to only sales. It is not limited to only finance or a personal thing. So what I'm going to teach you is applicable to all areas of your life. Those students, for example, a chartered accountant, his employee did the program, and you know what? His personal life changed. His ability to ask the money from the client, ability to raise invoice, get the money on time improved. Okay. So the application is on both personal and professional front. So what he says is, I'm leading a much rewarding and happier life because of Akshar's teaching and principles. Does it make sense? All right.
So let's begin. So first of all, I'm going to give you what? I'm going to give you instruction first, and all of you are requested and encouraged to do this no matter what. If you are driving, then you have to stop the car or whatever and then do it. And if you are sleeping or lying down on the couch, you have to sit up straight. There are 3 steps to it. So first step is you will have to fill up your lungs with full fresh air, whatever air you have. That's called inhalation. You have to inhale fully and completely. Abhi karna nahi hai, abhi instruction ko sunna hai. You inhale fully, and then the second step is you hold your breath. And then you hold your breath and start counting. You have to count how many seconds you can hold your breath. Once you feel pressurized, once you feel choking, then you have to release that, then you have to exhale. 3 steps to it: inhale, hold and count, and then exhale. So if this instruction is clear to you, let me know in the chat box, C as a clear, so I know. I will say start, and then we begin together. Everyone in the chat box. Wonderful. Awesome. So now what I want is that sit up straight. Now everybody please breathe, inhale, fill up your lungs with air as much as you can. Inhale, breathe, and now hold. On your own speed, you start counting 1, 2, 3. Jitna bhi aap kar sakte hain, you count at your own speed. No need to match anybody's pace. Okay, so start. And once you feel choked, once you feel completely like you can't do that, then you have to exhale. And once you have done that, I will tell you what is next for you. So everyone do that. Please do that, everyone. Because if you don't do this small activity which I'm asking you to do, then you know what? You are not going to do the big things which I'm going to ask you, which will help you get more sales and more money. So if the way you do small things, that's the way you are going to do big things. Okay, there's a book called Making the Bed. उसका बुक का सारी ये है कि फंडामेंटल चीज सिखाई जाती है नेवी में कि बेड बनाना है आपको अपना. वो इसलिए है कि 500 करोड़ का जहाज आपको दिया जाएगा, अगर आप बेड को ठीक से नहीं कर रहे हो तो उस जहाज को कैसे करोगे. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वांट यू टू टेक एवरी एक्सरसाइज सीरियसली. सो नाउ इन द चैट बॉक्स लेट मी नो how many seconds you were able to hold the breath. How many seconds you were able to hold the breath? Everyone, 60 seconds. Okay, then 23 seconds. Okay, good. कोई competition नहीं है. Wonderful. Keep it going. Okay. All right. So first of all, very well done. So good job for completing the activity. Now, I want you to understand this. This is a very important concept, a very important lesson for all of you. And from here only the transformation begins. Okay. So the most important thing is, no matter how long you held your breath, there came a point when you had to exhale. Yes or no? No matter how long you exhale, there came a time where you had to inhale again. Yes or no? Yeah. So आपको समझना ये है, if you are not able to maintain the balance between inhalation and exhalation, what is going to happen is you are going to get suffocated, you are going to get overwhelmed, isn't it? Now, like this, this is the life's fundamental thing, which I call as rhythm of inhalation and exhalation. The individual who can maintain the balance of inhalation and exhalation can be considered as a man or a woman of wisdom, can be considered as a sharp, intelligent, enlightened. And when you have wisdom, you can do anything in life with ease and grace. I want to ask you this question. For example, let's say you keep inhaling, and you don't exhale. What would happen? You will choke. Likewise, I want to understand this. When I am teaching you, when I'm giving you content, when I'm sharing my ideas with you, I am exhaling my knowledge to you. And then when you are listening and observing, that is called, you are inhaling knowledge and learnings from this class. Now watch this.
if I keep exhaling my knowledge, keep exhaling my content, and you keep inhaling, and if you don't exhale, what is going to happen? You are going to experience a phenomena. You are going to experience a phenomena that's called data poisoning. What's the word? Data poisoning. डेटा पॉइजनिंग का मतलब ये हो गया कि आपके पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड आ गया है, नाउ यू कैन नॉट थिंक, now you cannot do anything about that content. And you know what, data poisoning जैसे ही होती है, that brings the symptom called withdrawal symptom. Withdrawal symptom. Withdrawal symptom. What do you mean by withdrawal symptom? What do you mean by withdrawal symptom? Okay, withdrawal symptom is you are going to start getting disinterested in the class. Okay, you are going to start disliking people or community. These are the things are happening as a withdrawal mechanism of data poisoning. आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आपने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत 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 कुछ दे दिया, हर चीज अवेलेबल करा दी, और उससे आपने एक्सेल कुछ भी नहीं कराया, what is going to happen? You are going to get what? Spoiled kid. Do you understand that? Understand that? Yes or no? अब मान लेते हैं कि आप पूरी जान लगा के काम कर रहे हो, पूरी जान लगा के काम कर रहे हो, और आपको आपके मतलब का पैसा नहीं मिलता है, आपको आपके मतलब का पैसा नहीं मिलता है, तो क्या होगा? सो क्या हुआ? आपने फुल एक्सेल किया, आपने क्या किया? फुल एक्सेल किया, और आपको आपके मतलब का पैसा नहीं मिला, तो आपने इनहेल नहीं किया, तो क्या होगा? आपका काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप काम करोगे भी तो आप कैसे करोगे? आप करोगे डिसइंटरेस्टेड होके। कितने लोगों को पॉइंट समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? Yeah. So this concept applies to all the aspects. This concept applies to increasing sales also. This concept applies to all the aspects. सिंपल बात यह है कि मैं अगर आपको एक्सेल कर रहा हूं, और अगर आपने वहां से रिप्लाई नहीं किया, अगर आपने चैट में जवाब नहीं दिया, आपने अगर नोटबुक पे आंसर्स नहीं लिखे, these things are basically my inhalation. And if I don't inhale, what will happen? I will get disinterested. I am going to lose my motivation, and then I am not going to do the magic which I want. Then it will become a simple training program. Do you understand this? Understand this? Yes. Now I want to also understand, no matter how unusual or no matter how weird the exercise or the question may seem, remember, your active participation, your willingness to exhale, your willingness to engage is the key to your success in this course. Just by paying for the course is not going to bring the transformation. What do we need is your willingness. Please type in chat box, willingness. This is the most important word. So many people wanted to be here in this class, but they could not make it. You were willing enough to be here. That's why you are here. Is making sense, everyone? Yeah. So in our Go community, we use certain jargons. So one of the jargon which we use is LB. LB. LB means light bulb moment. So whenever you have got some realization, some ahas, I want you to type in chat box LB. This will help me inhale that, the fact that you got the point. You got the point the way I wanted you to you get it. Is making sense? So LB. So let's type everyone LB. That's an exhalation. And as I'm looking at the chat, that will be my inhalation. So the person who is going to maintain the rhythm of inhalation and exhalation, मतलब क्या हुआ? अक्षर से content लिया, फिर implement करके दिखाया, फिर content लिया, फिर implement करके दिखाया, content and implement. If you can maintain this rhythm, trust me, you would be getting those results which you have never seen in your life. And what you're going to teach, what you're going to learn here is also applicable across your all the areas. And you will see, suddenly you will see that your relationship with your spouse, your relationship with your employees has got improved. Is making sense, everyone? Okay, good. Now, another jargon which we use at USC and Go community is UNIS. UINS. So
This is called as uncomfortable is new sexy. Uncomfortable is new sexy. Now, what I'm trying to tell you is this: if you have growth on your mind, I have never seen someone who is growing without getting uncomfortable. So you need to understand, all of you, I'm going to do everything in my capacity to shake you from inside and make you uncomfortable to that level that two things can happen. So either you will hate me, or you would like to start quitting this thing, or you are going to get what? Transformed. Is this making sense to you guys? But I'm not going to stop making you uncomfortable. My approach is going to be weird. My approach, it is going to be unconventional, but I know only one thing. I am a results guy. I bring transformation in my students' life. The moment you finish today's session only, and you will wake up tomorrow morning, you will be transformed. Maybe the transformation is small one, but you will see shift in your personality, shift in your identity, shift in your viewpoint. Is this making sense to you? So everyone, please get ready to get uncomfortable throughout this journey. All right. So in the chat box, please, to make me understand, let me know, have you understood the concept of inhalation and exhalation fully and completely? If you have got it, I'm expecting 700 responses as Y or yes. Do not think, for example, that मैंने नहीं लिखा तो कैसे पता लगेगा. I want to tell you, we are an analytics driven organization. I capture the data, we analyze it, and you know what? We will call you also. Boss, आप अपना Zoom का video बंद करके क्यों बैठे रहते हो? Whereas you can get transformed by being in the class with videos on. Is making sense, everybody? Okay, good. Now, before we move forward, I want to ask you this question. In the chat box, everyone. Okay. What has opened up for you with this exercise, which I asked you to do it, inhalation, exhalation? What has opened up for you? What has opened up for you in the chat box, everyone? So communication, focus. Okay. Balance is key, willingness, implementation. Okay. Good. Okay. ये क्लियर है ना आपको कि अगर आपकी एपेटाइट 3 रोटी की है, अगर आप अपने बॉडी को 30 रोटी दोगे, which is inhalation, what is going to happen? You are going to vomit. It will come out. Make sense? So keep the balance of inhalation, exhalation. Okay? Don't be a goody student. Be in the dangle and start learning and doing it. Get uncomfortable. Okay? So now let's move on to your first intentional exhalation exercise. What do I mean by intentional exhalation? I mean to say, ab tak jo maine karaya as a part of drill karaya. Now I want all of you to this exercise with full awareness and full intention. And we are not going to move forward until all the 700 students have done this live in class. And those who are watching the recording, they are going to stop it here and they will do exercise, then move forward. And those who are driving, they should stop driving and do it right now. So what is the exhalation you have to do, everyone? The exhalation is you are going to send an email to me. This is my way of opening conversation with you. So you are going to send an email to me. To which email ID? To this ID, aksharyadav@gmail.com. aksharyadav@gmail.com. Okay? Now here's a very, very important point you need to understand. You have to use exactly this subject line. If you use any other subject line, your mail will be deleted, ignored. Nothing will happen to your mail. Nobody's going to read it. Nobody will look at the mail. So this is very important. You write this subject line. My promise for USC 2023 edition. Then
in the body, you write this or similar content. Okay, so you write hi Akshar. If you have got something Akshar sir, Akshar ji, those who are from past students, whatever you want to say, I'm okay with that. Hi Akshar. Okay, I'm glad to be part of USC 2023 journey with you and fellow participants. I promise to you and to myself that I'm going to do whatever it takes to build and improve my sales engine and succeed. I will not be a spectator. I will not be an evaluator. Rather, I will be in action mode. Looking forward for amazing learnings and regards and your name. I want you to send this email to me and everyone. We are not going to move forward if all these 700 people have not sent this mail to me. Okay, how will you know, Akshar? Because I'm looking at my mailbox. I have got the analytics. I can see it, how many people have done it. So everyone, please do it right now. Please do it right now. हरविंदर जी, मनीष जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने की, फ्लो के हिसाब से चलेंगे. आप इंटेंशन रखिए, आपको इंटेंशन पकड़ के चलेंगे. मैं अगर जापानीज भाषा में भी बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी. All right, everyone. So do this activity, exhalation. Do you want to become financially free? Everyone. And my eyes is on my email. All right, so I have started getting, once again, everyone, if सारे लोगों के mails नहीं आए, we are not going to start. So keep an intention. Why this is important? If you are not taking the basic step, then if I ask you to call your customer right now, will you call? No, you will have millions of reasons why you should not call. Okay, so get this right here. You either get transformed or you start hating. So I'm getting mails. Abhirupa, I got your mail. Aditya, Chetan Shah, everyone, good job. Keep it going. Keep it going. Wonderful. All right. So I have received 120 emails right now. I'm waiting for all the people. So everyone, this is a group program and we need group energy. Okay, 205. Make sure the subject line is like that. Otherwise, I'm not going to look at that communication. Okay, so those students who are thinking that I'm not going to send, okay, what I'm going to do is that I'm going to pull out your name, put it on the WhatsApp group, and make you accountable, saying that you have not done it. I'm not asking something big. It's just that you have to send this email. That's the first thing you need to do. Otherwise, you have not taken me as a teacher. So waiting for all of you to do that right now.
Ask your group members to participate. Some people are so fixed that they are not doing it. $400. We are not going to move forward till the time all of you have done it. So you encourage your, yes, Kanika, thank you for doing that. Vishal, I have got your mail. Everyone, please. क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको आपकी Wow. $500 plus. Okay, good. Okay, good. So awesome. Yes, Suresh, thank you for putting that in the chat box. Good, guys. Very well done. Very well done. And those who are still writing, please finish it up. And this is a very, very important exhalation activity. Now, first of all, tell me in the chat box, those who have sent email to me right now, how are you feeling? How are you feeling right now? What's your feeling in your heart, in your body? Feeling क्या है? Exact feeling बताइए. How are you feeling right now? How are you feeling right now? Okay, good. Committed, engaged, happy, curious, relief, committed, normal, waiting, curious, certainty, engaged, energetic, action, impatient, beautiful. Good job. Good job. Okay. Now, I want you to understand this. If you want results, that's why you are here. If you want results, you need to maintain the rhythm of inhalation and exhalation. In the form of your learning, in the form, then you have to answer it and participate it like a kid. You cannot sit idle and make notes. You got to do something in the chat box when I'm asking for it. Okay. It is not about whether your answer is right or wrong. What truly matters is your willingness to exhale, to actively participate, and to keep the learning process alive so that you can avoid data poisoning. Is making sense to you guys? Yeah, everyone? Awesome, awesome. This is we're just starting. Now,
Today's session is all about laying the foundation. Laying what? Laying the foundation. Getting the basics right. Now, let me know in the chat box. If you were to build a building, if you want to construct a building, if you have got poor foundation, what is going to happen? And if you have a strong foundation, what is going to happen? A strong foundation in building construction ensures stability. It ensures safety during the time of challenging circumstances like earthquake or storms. Similarly, a well-constructed foundation in sales sets the stage for predictable customer acquisition irrespective of market condition. Does it make sense? Now, I want to tell you that these basics are not taught, not clear, and people are not using it. They are just going for something shiny, something fancy. So my job is to make your sales foundation so strong, irrespective of what happens in your company, your sales team goes away or market dynamics changes, you get your basics right and you start getting the same sales, same business which you were getting earlier or more than that. Does it make sense? Yes or no? एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप अपने बच्चे को, जो भी आपकी एज है उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, आप अपने बच्चे को बहुत सारा नॉलेज और कंटेंट बनाना चाहते हो, देना चाहते हो, ताकि वो हर क्वेश्चन का आंसर दे दे और रोबोट बन जाए चैट जीपीटी की तरह, या आप उसको एक क्रिएटिव अलाइव इंसान बनाना चाहते हो जो कि जॉय में रहता है और अपनी जिंदगी के सारे फैसले ले सकता है और किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने की उसके अंदर वो क्षमता है. व्हाट वुड यू वांट? So I want you to make this clear to you. I'm not going to teach you those MIS, not going to teach you those Excel files, those formulas. I'm not going to teach you those ways with which somebody asks you to manipulate your sales team. कि उनका खून चूस लो, उनके ऊपर ट्रैक कर लो, वो जा रहे हैं तो पता करो कहाँ पे कर रहे हैं. अरे क्वेश्चन वो थोड़ी है, क्वेश्चन है कि आप सेल्स के लोग ऐसे हायर क्यों कर रहे हो. So we are going to discover those root causes, why things are happening. Is it making sense? And once we cover the foundation part, then we come to the orientation. During our orientation, we are going to talk about topics. कि कौन सा टॉपिक आप इस प्रोग्राम में सीखने वाले हो, क्या क्या कवर्ड है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्लास है, या उनको लगता है कि कोई सेल्स के कोई स्क्रिप्ट दे देंगे, कोई हैक दे देंगे. नॉट लाइक दैट. व्हाट इज गोइंग टू बी फ्लो, सेशन कैसे स्टार्ट होगा, कैसे फ्लो करेगा और कैसे खत्म होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बोरिंग थिंग फॉर यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई? बिकॉज यू हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस यू कीप आस्किंग इन द व्हाट्सएप. So this will take 10-20 minutes and I'll explain everything what you have signed up for. Then schedule कैसा रहेगा आपका, किस दिन क्लास है, कब क्लास है, क्लास नहीं है. Then some rules. बिना रूल्स के कोई भी गेम नहीं होता है, कोई भी कोर्स नहीं हो सकता है. तो what rules you have to follow to get the value. And then आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछना चाहते हो. हजारों लाखों क्वेश्चंस होंगे आपके पास. वो क्वेश्चन को कब पूछना है, कैसे पूछना है, वो मैं आपको बताऊंगा. अगर आपका सेशन मिस हो गया तो आप कैसे सेशन को कवर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, कब तक रहेगी रिकॉर्डिंग, ऑल दोस इंफॉर्मेशन. रिगार्डिंग क्वेश्चंस, आई वांट टू टेल यू, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग दिस. I have been teaching last 5 years, 4 years, and taught to thousands of business owners and have got their questions. And during the program, I am going to answer all the questions through my training education example. All I want is open mind, curious mind, and you will figure out slowly your questions are melting. I'm rather looking for new questions from the class, from the teachings. Make sense, everyone? So in this training program, I'm going to teach you timeless principles. Who understands timeless principles? Timeless principle. Okay. I'm going to teach you those timeless marketing and sales principles that have stood the test of time and market conditions. I'm not going to teach you hacks, cool tactics that is being offered in the name of advanced sales concept. Those tools, tactics surely work, but they work for short term. Yeah. You will see growth in sales,
but that will not be consistent. Throughout this program, I'm going to show you case studies and examples and lot of wins from past students, and you're going to learn from them. When they can do it, you can also do it. Okay. So today I'm not going to give you the hacks or in this whole training program. Today I'm going to give you seeds of sales success. Seeds of sales success. Today I'm going to sow something in you. And that something is so powerful that it is going to transform your game. You have never experienced this in your life. Okay. Now, the real question is, will you allow the seed of sales success to germinate and flourish within your business? Or will you constantly question their potential and keep jumping from one sales technique to another, never giving them the opportunity to take root and grow? Will you allow the seed? Will you allow the seed of sales success? Yeah. Remember, it is not about questioning the gardener. It is about your commitment to their cultivation. With the right care, attention, these seeds can grow into what? These seeds can grow into what? A tree. A tree. These seeds can grow into a tree. Tree of what? Tree of prosperity. Tree of prosperity. I'm not interested in helping you make some sales or 10% increment in sales or 50% increment in sales or 500% increment. I am trying to put a seed in you which can give you infinity possibility, infinity success, infinitive things. If you look at students' example, which I'll be sharing with you in my own business, it's an example of from nowhere, we are getting 400% of growth. I would have never thought or journal ki ye aisa ho jayega ek saal ke andar. So these seeds are going to work. Now, in terms of life, in terms of sales, what I'm talking about, these seeds will become thriving sales engine, for your business. What I'm trying to say is that this tree of prosperity is going to be a sales engine which is designed to just to grow your business to infinity. Is making sense to you, everyone? So at the same time, today I'm going to give you more than seeds of sales success, not just hacks. I'm giving you more than that. And that's called seeds of new viewpoint. Now, this may look very different concept than what you had in the mind. And that's where you have to be mindful. Are you being student? Are you looking at from a student's lens, or are you looking at from, main to iske liye nahi aaya tha? So tell me, everyone, this is the first important lesson. Tell me, everyone in the chat box, what do you mean by viewpoint? What do you mean by viewpoint, everyone? So give me your definition of viewpoint, because from here only the transformation will begin. From here only the transformation will begin. Okay, everyone. Perfect. So awesome. Let me give you a definition. All the definition which you gave is right. Okay, point of view, perspective. Got it, everyone. Thank you. So viewpoint can be defined as a way of looking at the situation. A way, यहाँ पे word को catch करेंगे. A way. It doesn't say the way. इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी सिचुएशन को देखने के कई तरीके से नजरिए हैं, कई जगह से आप देख सकते हो. Is it making sense? So a way of looking at the situation. You don't just get fixed about it. हिंदी में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दृष्टिकोण. Okay, good. So now to make you understand this, I want to share a story. This story, which is called a classical story of stone cutter story. You might have heard the story. This has got several versions of the story.
There are several ways to interpret the timeless lessons, but this has got a deeper meaning to make you understand the significance and the power of viewpoint. Okay, so one day a traveler was walking along a lane, and he came across the three stone cutters working in a mine. All three were doing the same job. They were busy cutting a block of stone. And out of these three people, one was at peace and happy from inside. It was evident on that person's face. So, is interested to find out what they were working on. The traveler asked the first stone cutter, "What are you doing?" And this guy said, "I'm cutting stone. Can't you see?" And traveler was, "Okay, I got it." Then he went to the next stone cutter and he asked, "What are you doing?" He said, "I'm working for money to feed and shelter my family." And then he got curious, and the traveler turned to the third stone cutter. And this guy seemed to be the happiest of three. And when he asked what he was doing, he replied, "I am doing what? I am building a temple." So what is the point here? The point which I'm trying to make you understand in the beginning only, which is the foundational thing, is that your experience, your results in any area of your life depends on your viewpoint. Your bank balance is the outcome of the viewpoint you have hold with regards to money. That's why you have that bank balance. Okay, this is the most important thing you need to understand. If you have understood viewpoint fully and completely the way I want it for you, becoming from good to great would be breeze and ease. Is making sense to you guys? Now, I hope you are getting some clarity about viewpoint, because अगर आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, आप जिंदगी भर सेल्स को एक हाई प्रेशर काम की तरह देखोगे, आपकी सेल्स की टीम हाई प्रेशर काम की तरह देखेगी, और एक्सेल फाइल में लाल रंग, हरे रंग, एनबीडी और सीबीडी और एमआरआर, पीपीआर, टीटीआर करते रहेंगे, और आपको कभी भी गति नहीं मिलेगी. Does make sense to you guys? A quote है डॉक्टर वेन डायर का. What he says is very profound, and I want all of you to write in your notebook. He says, when you change the way you look at things, the thing you look at change. Beautiful. मतलब कि अगर आप किसी के प्रति या किसी चीज के ऊपर अपना देखने का तरीका अगर बदल दो, तो वो चीज बदल जाती है. मानो तो पत्थर या मानो तो भगवान. Is making sense, guys? Give me a no. So I hope you are getting the concept, because this is the most important topic, more than sales, more than marketing, more than profit, more than cash flow, more than operation. Most important, because this, once you understand, will change many dimensions of life. आज रात को जब आप जाएंगे यहाँ से और सुबह उठेंगे, जब WhatsApp पे आप शेयरिंग करेंगे, I want all of you to watch your sharing. You will see कि आपके लिखने का तरीका ही बदल गया है. That is because of this concept only. Okay. All right. So I want all of you to spot who is this guy in the chat box. Is it he's Indian or bahar ka banda hai? Who is this guy? Everybody please write down. Is an actor or somebody else? Who is this guy? Okay, good. Okay, man. Okay, global citizen. Sardar Patel is a guy. Maybe you can say girl, doesn't matter, whatever it is. So what's your first? Amitabh Bachchan. Good, very good. Awesome. Beautiful. Man, person. Okay, good. Now all of you, I'm asking you to do an activity right now. आप सब लोग जहां पर भी बैठे हुए हैं, अपना जो हेड है, अपना जो सर है, वो राइट साइड की तरफ झुकाइए 45 डिग्री से ज्यादा. अपना राइट साइड को सर झुकाइए और अपनी बॉडी को थोड़ा पीछे लेके जाइए और देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है. आपको क्या फेस दिखाई दे रहा है या आपको कुछ और दिखाई दे रहा है? आपको अपना सर राइट को झुकाना है, राइट को, बिल्कुल राइट को झुकाना है. And then let me know, what do you see, everyone? What do you see, everyone?
What do you see, everyone? What do you see, everyone? कितने लोगों के लिए LB मोमेंट था ये? Awesome, awesome, awesome. Good, 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 good. Very different viewpoint, yes. और ये आपको ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे इसके अंदर. ओके, नाउ थोड़ा दिल से बात करना चाहता हूं आपसे, उसको प्लीज समझिएगा. द जॉब ऑफ एनी कोर्स, any program, whether you do it, your kids do it, your family does it, the job of any course, any program, any training, the job of a good course, okay, or any program guided by effective educator, guided by effective teacher or a guru, is not, that's what you have to understand, is not to provide you more information, is not to provide you more information, is not to give you hacks, ladies and gentlemen, is not to give you shiny tools. You know, with regards to information, let's say you want to lose weight, you want to do weight loss. Now, if you want to lose weight, you go to Google Babaji, you will get billions of answers, and you will go to Chat GPT Grandpa Ji. You will have all the thing what is to be done for the weight loss. With regards to information, you have everything. You know, अभी Chat GPT का एक केस सुना मैंने कि किसी मदर का बच्चा बीमार हुआ, सो Chat GPT ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दी और प्रिस्क्रिप्शन से सॉल्व हो गया. 15 डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए. इट्स अ स्टोरी, इट्स अ बिग रियल स्टोरी. एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, जानकारी की कमी नहीं है. आपको इंफॉर्मेशन अब नहीं चाहिए, अब आपको इंफॉर्मेशन डिलीट करना है. क्या करना है? इंफॉर्मेशन डिलीट करना है, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सके और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके. डू यू अंडरस्टैंड दिस? You don't need those hacks, please understand. And that's the job of an effective teacher, that's the job of an effective course. Okay, the job is not to just give you information, the job of any teacher, any course, is to expand your viewpoint. Throughout this program, my aim is to expand your viewpoint to such an extent that you can discover solutions to any sales challenge and dominate your market. Tell me, would you be interested in knowing few hacks which is available on udemy.com or youtube.com and some other courses? Or you want me to completely change your operating system, the way you operate, the way you look at life and business and sales, and you can get 400% growth? Give me yes or no. You want that or no? Yeah. So this is what you need to understand, is my job is not to tell you कि प्राइस कैसे बढ़ाएं. प्राइस क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो, वो व्यू पॉइंट मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका व्यू पॉइंट एक्सपैंड हो जाएगा, एंड देन यू वुड बी एबल टू क्रिएट ओन स्ट्रेटजी. मुझसे पर्सनली पूछोगे, माय एम इज आई ट्रेन यू सो वेल, दैट यू डोंट नीड मी. दैट्स माय इंटेंशन. You come to me with a bigger problem, newer problem, something which you have never encountered, something challenging for me. That's my intention. Understand that? So, everyone, is it making sense to you? Is it making sense to you? Beautiful. Beautiful. Okay. So now let's get ready for more FLBs. Now, how this concept of expanded viewpoint applies to business and sales, and let me give you some example, you will understand. Okay, so in the chat box, you keep exhaling that what you're getting, so I can just see, keep watching the chat all the time. Okay, so let's say this is you, and this is your customer. Okay, now just to make you understand, when I say you and when I say customer, always think like a person A, person B.
this person who's a customer here can be your employee, can be your spouse, can be your accountant, can be government official, doesn't matter. For this case, I'm taking example of customer. Okay, so I will tell you how this concept of expanded viewpoint applies to business, applies to sales. Now tell me, let's say you have this customer who is not paying on time. किसी को कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है और टरका रहा है? कभी मिला आपको? एवरीवन मिला कि नहीं मिला? सबको मिला है कुछ न कुछ रूप में. Now, when you are not getting the payment on time, what will you do? You are going to do follow-up. You are going to get call from a girl A, then girl B, then girl C, then girl D. You have done follow-up. Then you will send the person to the factory and office. You have done all the follow-ups. So every possible communication, yes or no? Now, despite these follow-ups, if you are not getting the payment, what will happen? You will get what? You will get angry, you will get upset, you will get annoyed, you will have mixed emotions. मतलब एक बहुत ही weird सा emotion हो जाएगा आपको. So now, जब आप सब कुछ कर लेते हो, कैच करो उसको, जब आप सब कुछ कर लेते हो, फिर भी आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ assume करोगे, कुछ conclude करोगे. Give me yes or no. So let's say आपने conclude किया कि ये customer चोर है. Let's say आपने conclude किया कि ये customer चोर है, या जो भी आप इसको word देना चाहते हो. अब आप एक बात बताइए, आप इस सामने वाली पार्टी को चोर की आंखों से अगर आप देखोगे, चोर की आंखों से देखोगे, चोर की आंखों से देखोगे, तो आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा? इसके साथ ऐसा होगा जिससे कि ये जिंदगी में कभी पैसा टाइम पे दे दे, या ऐसा होगा कि ये पैसा तो देगा ही नहीं और आपका नाम भी खराब कर देगा? एवरीवन, ओके? सो आपने क्या किया? आपने व्यू पॉइंट क्या रखा? चोर का. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आपका व्यू पॉइंट कहीं पर भी फिक्स हो गया है, आपका व्यू पॉइंट कहीं भी फिक्स हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपको सेम या वर्स रिजल्ट मिलेगा. सेम या वर्स रिजल्ट मिलेगा, आपको नया रिजल्ट नहीं मिलेगा. इज मेकिंग सेंस टू यू? So in our USC and Go community, we use a very interesting word. If you are fixed, whatever the word is, you are fucked. If you are fixed, you are fucked. What I am trying to make you understand is, अगर आपने इस व्यू पॉइंट से देखना शुरू कर दिया अपने कस्टमर को, तो आपका बिहेवियर अलग है. अब आप देखिए, मैं आपके कस्टमर के पास गया और मैंने पूछा कि सर आप इनका पेमेंट क्यों नहीं देते हो? तो इसने जो आंसर दिया वो वाई आंसर था, और जब मैंने इसकी बात सुनी तो ये वाला व्यू पॉइंट इसके व्यू पॉइंट से सही था, आपका वाला आपके पॉइंट से सही था. टेल मी, जब दोनों सही है तो गलत कौन है? जब दोनों सही है तो गलत कौन है? जब दोनों ही सही हैं तो सिचुएशन कैसी आ गई? लॉक हो गई कि लॉक हो गई? इज मेकिंग सेंस? Isn't it? So now I want you to understand this. When things are fixed, then your job is not to get more fixed. Your job is to become what? Flexible. Your job is to become what? Flexible. Is making sense? Now, let me give you a new angle to this situation. Let me give you a new angle to the situation, and let me know, as you, can you replace this chore viewpoint with something else, with this concept? Okay. So now I went to this gentleman. I said, why are you not paying the money? You know, then I got to know that his partner, the business partner, जो बहुत प्यारा था, business partner died. Because business partner died, he is very emotional. He is very emotional and he is very sad. And because he's emotional and sad, he is not going to business or factory or office. Because he's not going to business or factory, sale is not happening the way it should happen. And when sale is not happening, there is a cash crunch happening in the business. Now tell me, if you know this pehlu, this paksh of this customer, will your viewpoint change or will it remain same? Will change or same? Now I'll tell you what, some people may say like this, अरे भाई तेरा पार्टनर मरा है तो मैं क्या करूं, मेरे पैसे तो दे दे. Now if you keep this viewpoint, you are fixed, then you are fucked, meaning you are not going to get the result from this person. Now what I am trying to make you understand is this: if you have experienced these growth in your life and then you got stagnant,
then you got stagnant anywhere in your journey, you are not growing. You should be growing like this. If you are not growing like this, it means you are fixed. And the reason you are fixed is because of your viewpoint. And at that point in time, you need a new viewpoint and new perspective. Give me big hell LB in the chat box if you understand what I'm trying to say, everyone. Now, when you look at that, okay, I have got my viewpoint and he has his viewpoint. So interesting. When you know both the viewpoint and when you understand, I want you to look at the word. I did not say you agree. I say you understand the viewpoint. Look at the pehlu, look at the paksh. लोग understand नहीं करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया. Listening is not understanding, ladies and gentlemen. Please understand. The way you write in WhatsApp, tells that you are using sophisticated language to communicate, but your ideas are fixed. Okay. So what I'm trying to say, if you understand this pehlu and that pehlu, that's called expanded viewpoint. And when you have expanded viewpoint, then what do? You are going to try something new. And when you try something new, then you can expect new results. Maybe that result is not directly in your favor, but we are moving forward to a better result. Is this making sense to you guys? So understanding viewpoints. So example, there are few people who have written a very bad sarcastic communication to my team. Okay. Now, if you ask me personally, I want to throw them out. Now, the point is, I understand why he has done that. He has been cheated in his life so many times. He is so scared, so insecure that the only way he has is to do bad things or sarcastic things. I understand. That's why I have compassion. That's why I'm going to serve no matter what. It's making sense to you guys. So what we are looking at is the expanded viewpoint in the game. I want to give you an example of one of the students we have in our program, and there are hundreds of examples. It just popped in my mind. Sachin Chilana. Sachin's sales team was following up for the payment, and they had the customer was giving all the boring reasons, and it's been a long time. And Sachin came to the class and he understood about the concept of viewpoint. So what he did was he wrote a WhatsApp to the customer. He said, "Sir, I'm just worried that are you going through some bad time in your life? Is there some cash crunch you are going through? Let me know. I can be of some help to you." Now, when he wrote that message, within 30 minutes or whatever time, the money was paid back to him. Now, why this example was relevant for you is that Sachin did not said to the customer that tum sir aise ho. He said, okay, let's look at the new viewpoint. Let's look at what is possible, what I'm missing the point. Is it making sense, guys? So now the most important thing I want all of you to remember is, if you have limited or fixed viewpoint, you are going to have limited sales. So type in chat box LV equals to LS. Limited viewpoint equals to limited sales. And when you have big viewpoint, you are going to have what? Big sales. And when you have big sales means what? Big money. Who wants big money here? Everyone? Awesome. Good. Okay. So big viewpoint means understanding. I'm not saying agreeing. Understanding all the possible pehlus. This pehlu. When you understand other people's viewpoint, you will see an option, a solution which was not available to you in the beginning. Okay. So let me ask you this question. Okay. Now let's say you or someone has a limited viewpoint. And by the way, those who are coaches and those who have done many programs, I want to tell you that there is a difference between belief and viewpoint. So do not mix it. We'll talk about it later on. Okay. So if let's say somebody is having sales is not my cup of tea. Sales is not my cup of tea. Tell me how this person is going to behave and operate. Let me give you an example.
Let me give you example. So let's say we have got this sales is not my cup of tea. Let's say this is you. Okay, this is you. And you have got this viewpoint. Which viewpoint? This viewpoint. Now, when you have this viewpoint, then you are going to see the world like this. कि sales important नहीं है. Watch this. Sales important नहीं है. तो जब sales मतलब important है, but मेरे लिए important नहीं, is not my cup of tea. जब आप बोलते हो ना not my cup of tea, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं interested नहीं हूं. Yes, no, everyone. जब मैं कहता हूं मैं interested नहीं हूं, तो मैं क्या बोलता हूं? मैं disinterested हूं. यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा 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 कौन सा डिपार्टमेंट लेके आता है? कंपनी में पैसा सेल्स डिपार्टमेंट लेके आता है. अब आप देखो, मालिक कह रहा है या टीम कह रही है या एंटरप्रेन्योर कह रहा है कि मैं सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो बेसिकली क्या कह रहा है? वो मनी में इंटरेस्टेड नहीं है. इसीलिए उसका जो ग्राफ है वो यहां से आके स्टैग्नेंट हो गया है. इज दिस मेकिंग सेंस? इफ इट वाज एफएलबी फॉर यू, एलबी फॉर यू, लेट मी नो. नाउ somebody says I'm disinterested here. What does it mean? Then the person is saying I am interested in something else. And if you look at business, then where will you be interested? You will be interested in operations. Okay, if you look at your schedule, you are busy in meetings. Whatever meetings you do, these are the operational things. Now I want you to understand this. See this wonderful thing. Sales brings money. Sales brings money. Sales brings money. जो पैसा ला के दे रहा है वहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आपके ये एम्प्लॉयज हैं. क्या है ये? एम्प्लॉयज हैं जो कि ऑपरेशन के एलिमेंट में आते हैं. आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉयज से बात कर रहे हो, ऑपरेशन में घुसे हुए हो, जहां की आप पैसा देते हो, पैसा कमाते नहीं हो. कितनी बड़ी पोलैरिटी है. कितने को पॉइंट मिला मुझे बोल रहा हूं मैं? मतलब कि जिससे पैसा लेना है, बाजार से पैसा लेना है, तो बाजार में अपने दोनों हाथ के जो शर्ट के बटन खोल के उतरने के बजाय में ब्लैक कलर के सूट में, ब्लू कलर के सूट में आप ऑपरेशन में और अपने एम्प्लॉय के साथ बैठे हुए हो और स्विट्जरलैंड घूमने की कोशिश कर रहे हो. कम ऑन गाइस, कम ऑन. आप मुझे बताओ, आप अपना कॉमन सेंस कब यूज करोगे? यहाँ पे कोई बैठा हुआ इंसान कोई स्ट्रगलर थोड़ी है. सभी लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं. Is this making sense to you guys? So now my whole point to make you understand is, if you carry with a limited viewpoint, trust me, no program, no course is going to make it happen. I have attended, like many of you, Tony Robbins program, and my life changed, my life improved. Not that he was great, because I listened to him and applied. And there are thousands of people who have never applied. They got no result. So point is, you have to expand and expand and expand and keep expanding your viewpoint. And today also, when we finish, you will see your viewpoint has been expanded. And when you finish Ultimate Sales Engine and you do full year with me, you will not be the same person who you are right now. You will see the micro increments in your viewpoint expansion every session, every hour. Is it making sense to you guys? Now, let's say somebody is having this viewpoint. Sales is tough, market is tight. I want you to close your eyes and just see that. Let's say you have this viewpoint, sales is tough, market is tight. If you have this viewpoint, what kind of behavior you are going to exhibit in terms of getting customers? Tell me in the chat box. Sales is tough. Obviously, then you will show no interest in sales because it's tough. जैसे बोलते हैं ना, math tough है, math tough है. So math tough का मतलब क्या होता है? मतलब ये हो गया, अरे भाई दूसरा कैसे कर रहा है? बिकॉज उसने ये व्यू पॉइंट रखा हुआ है, मैथ्स फन है. Does it make sense? So if you say there is only one way to sell, what will happen? You are not going to look at other ways. You know, I want to tell you that I have studied to improve my craft over 12 different type of selling systems, including spin selling, gap selling, and other selling things. All of these selling systems are wonderful, 100% correct, and 100% works. But the question is, will it work in your business? Well, the answer is not sure.
Now, here's the point. Somebody who is doing business through spin selling or a consultative selling, that person, if I tell you, brother, you have to use four-phase way of selling, that person is not going to look at it. Why? Because the person thinks the viewpoint is there's only one way to sell. Is this making sense to all of you guys? Okay. So this method doesn't work in my business. Akshar sir, we work in government. We have got B2B. आपकी कैटेगरी में बड़े सारे मैन्युफैक्चरर हैं, कोचेस बोलते हैं सर्विस, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. ये वॉर चलती रहती है, बट कभी भी कोई इंसान अपना व्यू पॉइंट एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करता है. समझने की बात यह है कि जो व्यू पॉइंट बदल लेगा वो गेम बदल लेगा. Does it make sense? So what we need is a bigger shift in viewpoint. So from this viewpoint to this viewpoint, tell me, if you have this viewpoint, how are you going to behave? What is going to be your overall behavior? Everyone. What will happen? Yes, game changer, take action, look for market. Yes, motivated, sky is the limit. So now if you go with this viewpoint, you will have new answers, new ways, new things in business. So far, so good. So if you have got this viewpoint and you shift from here to here, game will change. Selling is like having discussion with a friend. Selling is like having a discussion with a friend. सेलिंग का जो कॉनोटेशन है, वो कॉनोटेशन पता कैसा है? वुल्फ ऑफ जो वॉल स्ट्रीट है ना, वुल्फ ऑफ जो वॉल स्ट्रीट मूवी है, उसके अंदर जैसे कि जिस तरीके से चिल्ला के सेल की जाती है, वैसा वाला कॉनोटेशन है मोस्ट लोग, बहुत सारे लोगों के सामने में. किसी के सामने में बेगर की तरह है, कुछ और है. नाउ इफ यू डेवलप दिस व्यू पॉइंट कि भाई बातचीत की तरह ही है, दोस्त से बातचीत की तरह ही है सेलिंग, योर अप्रोच विल चेंज. गिव मी यस और नो. Yes or no? Make sense? Yeah. So tell me, if you like a movie, you go to your friend or a relative with suit boot, with Louis Vuitton bag, to tell him that you should watch and show the presentation and show the script, or you just say everything which is in your heart and you push till the time that person goes to the movie. How do you do that? That's what I'm trying to say. So selling is like having a conversation with a friend. That's how you have to approach. That's the viewpoint we have to look for. Okay? Wonderful. Okay, so now what is the benefit of expanded viewpoint? When you have got multiple viewpoints, what is the benefit of that? Who can tell me? Okay, let me give you an example, and I want you to tell me if you have understood fully or completely or not. So let's say this is your customer. And one of your competitor is poaching this customer. Okay. So now your customer has X viewpoint कि I am going to get something for Sasta, for example. Sasta. Okay. And your customer is using whatever strategy, sir, GST nahi karenge, whatever. So now tell me, if you understand your customer's viewpoint X and your competitors' cheesy, inferior strategies, your approach to convince the customer will be same or different? Isn't it? Now watch this. There is a dominant player in the market. He is also a competitor. Let's call it a C2, dominant player. Now this guy is using Z viewpoint. Let's say I'm going to get funding. And I'm going to burn all the money in the marketing. Okay. And I'm going to get his all customers, get your customers, everything. So now I want, and this is you. Please tell me, if you understand his viewpoint, will you not develop a new viewpoint, an expanded viewpoint, which will help you craft a better sales strategy, a better marketing message, better collateral,
अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता और इसके बारे में नहीं पता, यू आर बेसिकली पुटिंग द डार्ट्स इन द डार्कनेस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट where acquiring customers is changing fast. Those who can assume, understand, hold multiple viewpoints are the ones who are going to win and dominate the market, not the one who is looking for short-term quick ways. Is this making sense to you guys? Okay, so मैं कह रहा हूं कि मार्केट में वही जीतेगा जिसके पास मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है। मार्केट में वो नहीं जीतेगा जिसके पास बेटर प्रोडक्ट है, जिसके पास बेटर प्राइस है, जिसके पास बेटर टीम है। ये आपको एक्स पॉइंट से वाई तक लेकर जाएगा, उसके बाद स्टॉल्ड हो जाओगे, आप स्टॉल्ड हो जाओगे। आपके बिजनेस में स्टैग्नेंसी और स्लो ग्रोथ जो है वो आ रहा है लिमिटेड व्यू पॉइंट से। Does it make sense? So now is an exhalation time, everyone. I'm asking you to do an activity right now and let me know. You have to first think, don't jump on the writing, and you will write in your notebook. You will write this thing in your notebook. Okay. Okay. So I want you to think of any area of your life. When I say area, it can be operation, sales, family, relationship, doesn't matter. Any area of your life where you had the limited viewpoint and then you got expanded viewpoint, and because of limited viewpoint you were getting X result, because of expanded viewpoint you got 10X results. So I want you to look for an area of your life where you had slow progress. पहले progress slow थी, फिर slow progress थी because of limited viewpoint. I'll give you one example so that you can understand. Okay, हमें वो एरिया ढूंढना है जहां पे पहले लिमिटेड था फिर एक्सपैंड हुआ। जैसे I'll tell you what, when I come from a simple middle class family and I had money issues throughout my life, and I always thought, I had this viewpoint that money becoming rich is only for the rich class, those people who born with silver spoon. It is not for us. Okay, जो मेरे friends थे वो सब लोग middle class के थे. Things were very different. So one of my mentor teacher told me, अक्षर, money के ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है। अगर आप मनी की साइंस को समझ जाओगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। सो मनी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ देन यू आर पेड फॉर। आपको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा की वैल्यू क्रिएट कर दोगे तो आपको मनी मिलेगा। ये मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा एलबी मोमेंट था, बिकॉज जैसे ही मैंने इस व्यू पॉइंट को एक्सपैंड किया तो मेरी पैसे कमाने की क्षमता और दूसरे कमा सके उसको बताने की क्षमता कंप्लीटली बढ़ गई। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ एन एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू हैड लिमिटेड व्यू पॉइंट एंड देन you got expanded viewpoint. Now when you got expanded viewpoint, what happened when you got expanded viewpoint? What happened? Everybody please write in your notebook. This is exhalation time and I'm watching your screen. I can see your faces. Yes, everybody please. In your notebook.
Awesome. Good job. Okay, good. Okay, very good. So first of all, good job for doing the activity. Okay, good. Now, another activity, another activity, another activity. Okay. So all of you write in your notebook after thinking. Do not write in chat box and do not jump to write. Think about it. आज शाम को 5:55 पे या 50 मिनट पे या 6:05 पे when you entered into the class, when you came here, before the class, what viewpoint you were holding about this program? What viewpoint you were holding about this program? What viewpoint you were holding about the community of USC in Go? And what viewpoint you were holding about me? You have to write down in your notebook. So before you came to the class, be very genuine. और आपको किसी को share नहीं करना है, तो you can be as ruthless as you want to be. So no need to share. So all of you in your notebook, write down what viewpoint you were holding about this program, about Go community, and maybe about me before the start of session, before start of this class. Everybody in your notebook, genuine wala. किसी को दिखाना नहीं है. Everyone done? Good job. Very good. Now. Next question. Now, what new and expanded viewpoint you got in last 60 minutes about the program, about the community, and about the me? Write down in your notebook. What new and expanded viewpoint you got in last 60 minutes, 90 minutes about the program, about the Go community, and about me? Okay, so in the chat box, good job everyone. So in the chat box, I want you to tell me कि शाम से लेकर अभी तक आपका व्यू पॉइंट एक्सपैंड हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बारे में, प्रोग्राम के बारे में, चीजों के बारे में एक्सपैंड हुआ कि नहीं हुआ. ओके, कुछ लोग होंगे जो ऐसा एक वर्ड यूज करेंगे कि सेम, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम जैसा मानते थे वैसा मान रहे हैं. तो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं आपकी लर्निंग के लिए. ये लॉ है क्वांटम फिजिक्स का और लाइफ का कि अगर आप दो चीज को, लेट्स से एक्स को और वाई को, जब मिलाएंगे तो दोनों का अपना अपना आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा और कुछ और ही पैदा होगा. लेट्स से जेड पैदा होगा एग्जांपल के लिए. ये लॉ है. ये आपका जो इनपुट है और ये इनपुट है, जब मिक्स करेंगे तो अगर मैं आपको कुछ कंटेंट दे रहा हूं और आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो बननी है, वो चेंज होना ही होना है. अगर मैं कोई कंटेंट दे रहा हूं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब क्या है कि आपका इवैल्यूएटर माइंड ऑन हो गया है और ये आपका पहला सिग्नल है कि आप कोर्स से हेट्रेड की तरफ बढ़ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Wonderful. So now, after doing this exercise and expanding your viewpoint,
tell me in the chat box, how are you feeling? How are you feeling? How do you feel? What's the word that will define your feeling? What's the word that will define your feeling? Okay, I'm not looking for a positive word. I'm looking for how are you feeling? You can just say interesting, useful, better. Yeah. Good, 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 good. Awesome. Thank you for sharing this. Okay. So, how many of you would like to know how do you expand your viewpoint? How do you expand your viewpoint? How do you expand your viewpoint? Okay. भाई हमने ये तो सुन लिया ना कि limited viewpoint is equal to limited sales. And then big viewpoint, expanded viewpoint means big sales and big money. Yes. So how do you expand your viewpoint in any area? There are three things you need to understand. Three things. The first thing is you need to have willingness. What's the word? Willingness. Willingness को आप simple भाषा में बोल सकते हो इच्छा. आपकी लाइफ में कोई भी आउटकम, इसको वर्ड को, इस लाइन को, इस चीज को अच्छे समझेंगे. आपकी लाइफ में कोई भी आउटकम जो है, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, चाहे वो गुड हो या वो बैड हो, वो आपकी विलिंगनेस से ही आया है. ठीक है. जैसे मान लेते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है और अब वो मानता भी नहीं है. मान लेते हैं आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है, आपके वीपी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या वहां से आर्ग्यूमेंट चल रहा है. तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम उसको ट्रैक करेंगे तो यू आर विलिंग एट सम पॉइंट इन टाइम कि चलना कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो अगर आप विलिंग को चेंज कर देंगे, अपनी विलिंगनेस को चेंज कर देंगे, तो आप जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको पॉजिटिव में ले आएंगे. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. मैंने कल भी यही क्लास की थी. आई वॉज विलिंग टू स्पीक फॉर 4 hours. आई एम विलिंग टू स्पीक फॉर 4 hours टुडे ऑल्सो. इट्स माई विलिंगनेस that is causing the outcome. Is making sense to you? Now question है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी भूख नहीं है आगे बढ़ने की. आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं मैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ना अनविलिंग हूं. एग्जांपल देता हूं मैं अनविलिंग का. You will be smiling and laughing. There are so many people, despite billions of requests till next 2 months, they are not going to open their Zoom. Meanings they are not going to open their Zoom video. Not at all. They are not. So they are unwilling. Now somebody who is unwilling like this, it simply tells me he is fixed in his viewpoint. And somebody who is fixed will have a limited viewpoint, and he will have a difficulty, or she will have a difficulty in getting the value. Yes or no? Now who wants to know why somebody gets unwilling? Why somebody gets unwilling? पहले हम कस्टमर से बात करते थे, अब बात नहीं कर रहे हैं. पहले हम बहुत कुछ करते थे, अब नहीं कर रहे हैं. पहले हम चाय पे चर्चा करते थे, हम नहीं कर रहे हैं. Why we get unwilling in life? Who wants to know that? The reason is you are somewhere in your life you got hurt. Somewhere in your life you got cheated. Somewhere in your life you got failed. And from those failure and cheating, you have developed a viewpoint. And because of that viewpoint, you got unwilling to look at things, and you became jiddi towards approach. Is making sense to you? Now, here's the point to you. Here's the point to you. Here's the point to you. If you switch this attitude कि हाँ अक्षर कुछ कह रहा है, ये बंदा जान लगा रहा है अपनी, so let's be willing. Let's be willing. So if you just do be willing, the moment you are willing, you will start getting some ideas, some viewpoints. Is this clear so far? Clear? Now, second point is, after willing is you have to delete false ideas. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बात बताई थी अपने बारे में. आई हैड दिस आइडिया कि जो पैसा है ना वो रिच क्लास के लिए है, वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं है, तभी तो उसका नाम मिडिल क्लास है, isn't it? So I had this false idea. अब जब तक वो फॉल्स आइडिया आपके पास होगा या मेरे पास होगा, तो क्या होगा, आपकी विलिंगनेस से भी कुछ खास बात बनेगी नहीं. स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, बट पूरी बात नहीं बनेगी. सो करना क्या है कि आपकी लाइफ में जहां पर भी स्लो एरिया है, जहां पर भी चीजें स्टॉप हो गई हैं, मान लो दो लोगों में बात नहीं हो रही है, या मान लो गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में बात होनी बंद हो गई है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका कोई ना कोई ऐसा फॉल्स आइडिया है जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. तो हमें करना क्या है, फॉल्स आइडिया को ढूंढना है और उसको डिलीट करना है.
फॉल्स आइडिया को ढूंढना है और डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब ये है कि आज से मैं इस सत्य को नहीं मानूंगा, मैं नए सत्य को मानूंगा। सो फार सो गुड। थर्ड पॉइंट इज, जब आपने डिलीट कर दिया तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, सूत्रास, टाइमलेस प्रिंसिपल्स। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंड्रॉइड से एप्पल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या ऐसा मान लेते हैं कि एप्पल में एक नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, सूत्रास। देखो हर बिजनेस में, हर एरिया में, हर जगह में कुछ सूत्र होते हैं। फाइनेंस के सूत्र हैं, सेल्स के सूत्र हैं, मार्केटिंग के सूत्र हैं। अगर वो सूत्र आपको मिल जाएं और उसको आप इंस्टॉल कर लो तो गेम चेंज हो जाएगी। सो हाउ डू यू इंस्टॉल थिंग्स? एक बात बताइए, बच्चों को कोई भी इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं? जैसे चोरी करना गलत बात है, कैसे कर सकते हैं? जब बच्चे ने पहली बार चोरी की तो माँ मुस्कुराई और बाप मुस्कुराया और कुछ भी नहीं किया, तो माँ बाप ने इंस्टॉल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे तरफ जो है, माँ ने उसके हाथ पे एक फुट्टे से मारा, बोला खबरदार जो चोरी की दोबारा, तो वो इंस्टॉल हो गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। सो बार बार एक ही बात को अगर आप सुनेंगे और बोलेंगे तो इट विल गेट इंस्टॉल्ड। दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू रिपीट सो मेनी थिंग्स, सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, till the time it becomes your second habit, second nature. Is making sense to you guys? Yes or no? Yeah. So first is willingness, second is deleting, third is what? Installing. Third is what? Installing. ठीक है? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स के। ऐसे मेरे पास 300, 400, 600 एग्जाम्पल्स होंगे, बट बिकॉज टाइम का इशू है तो मैं आपको कुछ छोटे मोटे बताऊंगा, जस्ट टू शो यू कि मैजिक होता क्या है जब आप अपना व्यू पॉइंट एक्सपैंड करते हो। तो ये सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर, पिछले साल इसी क्लास में थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, फिक्स व्यू पॉइंट के साथ और एक स्टैग्नेंसी के साथ, और 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 जब वो आए और जब उनका व्यू पॉइंट एक्सपैंड हुआ तो मैजिकल आउटकम हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे सिप करके समझेंगे इसको। ओके, तो ये एग्जांपल है अनुज मित्तल का। उनकी जो कंपनी है वो क्या करती है, लो कॉस्ट ट्राउजर बेचती है मेन को। 300 रुपए से लेके मान लेते हैं 500 रुपए का आसपास जो भी रेट होता होगा, ये लो कॉस्ट ट्राउजर, खाकी ट्राउजर सेल करती है। किसको सेल करती है? ये बेचते हैं आड़तिया को, एजेंट को, होलसेलर्स को, डीलर्स को। ये एंड कस्टमर को, जिसको पैंट खरीदनी है, पहननी है, उनको नहीं बेचते हैं। इज मेकिंग सेंस? अब इनका लिमिटेड व्यू पॉइंट क्या था अनुज का? ओके, लिमिटेड व्यू पॉइंट ये था, हम एजेंट्स के साथ काम करते हैं, हम एजेंट्स के साथ काम करते हैं, वहां पे फंडे नहीं चलते, वहां पे उधारी का खेल है। मतलब कि अगर मैं उधार दे दूंगा तो सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई हिसाब किताब नहीं है। अब मेरा पॉइंट सुनिएगा प्लीज। हम ये बात को तो कह ही नहीं रहे हैं कि क्या ये व्यू पॉइंट गलत है कि सही है। कितने लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? वी आर नॉट ट्राइंग टू कम टू दिस पॉइंट कि व्यू पॉइंट इज राइट और रॉन्ग। what we are trying to make you, what I'm trying to make you understand is to understand the viewpoint, कि हाँ ये भी एक तरीका है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज से कई साल पहले लिविंग रिलेशनशिप का फंडा नहीं था। जो फर्स्ट टाइम किसी ने देखा तो उसको शॉक हो गया, ओह माय गॉड, हाउ कैन यू लिव विद अ गर्ल और अ बॉय विदाउट गेटिंग मैरिड? नाउ दिस लिविंग रिलेशनशिप इज कॉमन। व्हाई? द कॉमन का मतलब ये हुआ, द पीपल हैव गॉट अंडरस्टैंडिंग, ओके, this is also another way to lead a life. Is this making sense, everyone? Okay, now once again I'm telling you, the question is not about is this viewpoint right or wrong. The question is, if Anuj is having this viewpoint, which viewpoint? This viewpoint. Tell me, with this viewpoint what will happen? Will he get new answers, new results, new outcome? He is not going to get. You know what? Very interesting thing. Because of these limited viewpoints, what happened? He never tried anything in new. He never tried anything in new. He used a strategy called hope strategy. भगवान कराएगा, हो जाएगा, इतना दिन किया, आज भी हो जाएगा, बाद में भी हो जाएगा. Business was not growing. And you know what? The dark part is he was living life in fear. And it's real thing. I would invite him someday on the screen to share his full story. I would also invite so many other students who have changed their viewpoints, who have printed the money, who have made millions, and they will tell you exactly what they have done and how you can do it, how you can model and copy that. Okay? So is this clear to all of you that if Anuj had this viewpoint, this limited viewpoint, his game is not going to move forward? Is this clear to everyone? Okay. Now what happened? He did the ultimate sales engine. He did the Get Ever book. He got trained under me. And now this is the expanded viewpoint he got.
he said agents डीलर्स होलसेलर्स भी तो इंसान ही हैं, लोग ही हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नई साइंस से, चलो ट्राई करते हैं। ये जो बिहेवियर आया, चलो ट्राई करते हैं, इससे पूरी की पूरी गेम चेंज हुई। अब ये बिहेवियर, ये व्यू पॉइंट आया कैसे? आया विलिंगनेस से, डिलीट करने से और इंस्टॉल करने से। WDI, विलिंगनेस से, डिलीट करने से और इंस्टॉल करने से। इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस एवरीवन? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, अपना जिद सक्सेस में लेकर आइए, अपना जिद लर्निंग में मत लेकर आइएगा। आपको अक्षर का मैजिक मिस हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए, सो इसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ, पहली बार उधारी के बजाय में he started getting payments on time and then got the better margins than before. हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्जिन 25-25 पैसे का हिसाब होता है, यहाँ पे ही इज एबल टू गुड मनी एंड देन his business for the first time in his life is on the overbooked state. And when I say overbooked state का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ऑर्डर्स अगर ओवरफ्लो कर जाते हैं, that's what we call as an overbooked state. Is making sense guys? कितने लोगों को समझ में आया कि व्यू पॉइंट चेंज करने से गेम चेंज होती है? एवरीवन, लेट्स गो अनदर एग्जांपल। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि इससे ज्यादा कॉमोडिटी नहीं हो सकती है। दाल चावल बेचने से ज्यादा क्या आपकी प्रोडक्ट कॉमोडिटी हो सकती है? दाल चावल। लेफ्ट जाओ तो दाल चावल मिलेगा, राइट जाओ तो दाल चावल मिलेगा, स्विगी से मंगा लो, किसी से भी मंगा लो। सो we have got Shivang Chawla from Lucknow, and he is in the business of offering grocery household items in the supermarket format. ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। बाजार में बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, रिलायंस का मार्केट है, उस मार्केट में चावल दाल पेस्ट बेचा जा रहा है, और लोकल लोग भी बैठे हुए हैं जहां पे कि आंटीज मदर्स और जो सिस्टर्स है वो वहीं से ही लेती हैं उस मार्केट में। इनका क्या ऑडियंस है? मिडिल क्लास फैमिलीज। कहां पे? लखनऊ में। अब आप देखो, शिवांग कह रहा है, अक्षर सर आई लव यू, you have got great energy and you have got so much of empathy for all of us, I respect that, but when I hear but, what you get is limited viewpoint. He said marketing is a waste of time and money. Marketing is a waste of time and money. Now tell me, if Shivang or anybody of you has this viewpoint, marketing is a waste of time and money, how you are going to behave towards marketing? Because I told you, marketing is that aspect of business that brings money in the, बाकी मार्केटिंग के अलावा कोई और डिपार्टमेंट नहीं है जो पैसा लेके आता है, या तो पैसा बचाता है या पैसा खर्च करता है, लेकिन लेके नहीं आता है। इज मेकिंग सेंस टू यू एवरीवन? नाउ he said to me that we are into self service retail. So self service retail में ये कैसे चलेगा? जैसे कि आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख रहे हो, रिलायंस जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ प्राइस वॉर में जीतना मुश्किल है। अब आप सोचिए कि आपने सामने में रिलायंस को इतना बड़ा धुरंधर मान लिया है, अब क्या होगा? दिल में दुगदुगी लगी रहेगी कि हमारा स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा। Because of this viewpoint, he is what? Fixed. And when you are fixed, you are not moving forward in the life. This is making sense to you, all of you? And same thing, because of fixed viewpoint, वही stagnancy थी, वही uncertainty थी, वही hesitation थी, वही self doubt थी। He is in the class. Any example which I am giving you, everybody is in the class. They can vouch for it, and I will ask sometime they come on the screen and share their stories, but not today. Okay. Now, expand क्या viewpoint? उन्होंने क्या एक्सपैंड किया कि what local player can do, national player can't do. जो चूहा कर सकता है वो हाथी नहीं कर सकता। इज इट मेकिंग सेंस? जो चूहा कर सकता है वो हाथी नहीं कर सकता, जो छोटा प्लेयर कर सकता है वो बड़ा कभी भी नहीं कर सकता। इज मेकिंग सेंस? एंड देन ही सेड वी कैन गो डीप इनटू द हार्ट्स ऑफ पीपल। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर के हार्ट में जाने का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वी कैन गो। And as a result, what happened? 50% increase in customer loyalty. Customer बार बार लौट के आ रहे हैं। अगर 2,000 रुपए का माल ले रहे थे तो अब वो 3,000 रुपए का माल हो गया है। Is making sense, guys? Why again and again? My only job for you is to change your viewpoint. Rest, you are going to find the answers yourself. Okay?
Those people who are asking how, I want you to replace how with curiosity. Instead of saying how, use the word interesting. You're going to get the value. Okay. Now, I had this objection coming from almost all the students who were dealing with government. Okay. Now, this is example of Prashant Kabra. He's in the class right now. Prashant Kabra is offering products to government department for the civil site soil issues. Okay. Now, the limited viewpoint he had was government people are different breed and they will be unpredictable. मतलब उनको अगर टाइम मांगो वो देंगे, बट मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं. वो आपको यस बोल देंगे, यस का मतलब है कि यस है कि नहीं है, वो हो जाएगा. So that was his perception. Now tell me, if Prashant or you have this viewpoint, what kind of behavior you are going to take? What kind of behavior you are going to take, or Prashant is going to take? Tell me in the chat box. Everyone. Change business limited. Okay, stick to old ways, growth opportunity. Awesome. Okay, so many people are asking for the switching of the video. I will not. I want to go with the flow so that you can focus on the content. Okay, I'm not Shah Rukh Khan, so I keep that thing in mind. All right, let's go, everyone. So when he changed his viewpoint, he said, they're also human beings. And what he did was he hid his product and he started showing MCB, which you will learn, providing transformative content, which you will learn, and using forfeits, which you will learn. When he got this viewpoint कि मुझे product के बारे में बात ही नहीं करनी है, then what happened? First of all, he got the dignity and valuable listening, because जब वो किसी के पास मिल रहे हैं सामने में, तो वो कह रहे हैं मैं माल बेचने आया ही नहीं हूँ. And then he got margins, never before margins. And instead of negotiations, and he got appreciations and repeat orders. So this is again happening because of the what? Expanded viewpoint. नए सेल्स को बंदे को लेकर नहीं आए, नई कोई कोर्स नहीं किया, कोई नया शीट नहीं किया, रादर अपनी टीम को हटा दिया और 2-4 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज इनका खुद का व्यू पॉइंट क्लियर हो गया है. तो इनकी अब सेल्स टीम नहीं है, मार्केटिंग टीम है, जो कि इतना इफेक्टिवली काम करती है that it produces result. Is making sense? Okay. So once again, how do you expand your viewpoint? How do you expand your viewpoint? So you expand by viewpoint by showing willingness. आप अपने को promise करो कि I'm willing to learn something new. I'm willing to do this. And then you start deleting the fixed ideas you have. जैसे ही आपने किसी भी समय में आपने but use किया, हमारे ट्रेड में ऐसा होता है but, तो वो क्या है? वो एक तरीके का लिमिटेड व्यू पॉइंट है. फिर से बता देता हूं मैं आपको, लिमिटेड व्यू पॉइंट हो, एक्सपैंडेड व्यू पॉइंट हो, हमारे को इसमें नहीं जाना है कि ये गलत है कि ये सही है. हमारे को इसमें जाना है कि मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर मैं अपनी लाइफ में फिक्स्ड हूं तो इसका मतलब क्या है? मेरा व्यू पॉइंट लिमिटेड है. इज दिस मेकिंग सेंस टू यू गाइस? And then you start learning from teachers, those who give you sutras, not those who gives you hacks. Is this making sense? Okay, everyone. Now, in this 7 weeks, what is going to happen? I am going to sow the seed of sales success, seed of new viewpoint. And that seed will become a sprout. Then it will become sapling, then small tree, then tree with flowers, and then you will get fruits. These are the fruits. These are the fruits in the name of sales and profit. And then you get the fruits with seeds. So this is what is going to cycle is going to look like. And then a time will come, then you are going to put these seeds in your team. You are going to put these seeds in your team, and then they will become sprout, and they will teach, and the same loop will happen, and you are going to go to the infinity loop. Is it making sense? That is my intention. अभी बहुत सारे लोगों को फनी लग रहा होगा, फिलोसफिकल लग रहा होगा, लेकिन आज से कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद इसी स्लाइड को आप याद करोगे, इस एग्जांपल को याद करोगे, बोलोगे, oh my God, I could not understand at that point in time. Okay,
So today I'm going to give you seeds of sales success. Today I'm going to give you seeds of expanded viewpoint, which will give you new life. Because what you are going to learn here will also applies to different aspects of your life. Your relationship with your family, your customers, employees will change radically. So everyone, tell me, is this making sense to all of you? All of you. Okay, good. Now let's do next activity. I have a question for you. Now let's say all of you, let's say all of you, I want all of you to imagine this, that you are in a business of you are in the business of packaged water. You are competing with Bisleri, you're competing with other big brands. You are in this packaged water business, all of you. Imagine that, ठीक है? सारे लोग हो, यानी कि अगर 750 लोग हैं तो 750 कॉम्पिटिटर इसी क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो आपके पास एक डब्बा आता है ब्राउन कलर का, और वो उस डब्बे के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप खोलो तो आपको बिग ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है? एक डब्बा आता है जिसके अंदर कुछ कुछ कोड है, कुछ चीज है जिससे कि आपको बिग ऑर्डर मिल जाएंगे। मेरा एक सवाल है कि अगर वो डब्बा आपके सामने में आएगा और वो डब्बा इस जगह पे अवेलेबल होगा तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एवरीवन जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, और जनरली व्हाट आर यू गोइंग टू डू? What are you going to do? Okay, you will just talk about it or do something about it. Okay, so now I want to tell you this. While you are thinking, looking at the screen, while you're looking at the screen, I want all of you to see this. There is a group of people who are not looking at the screen, they are doing something about it. And now watch. In this highly competitive market, 750 people, we got 21 people who showed up, 21 people who took the action, okay? So now, what is the point I'm trying to make you understand? The point I'm trying to make you understand is this, ladies and gentlemen. The point is this. The first lesson I gave you about the expanded viewpoint. The second lesson is market reward action. Market reward action. Just by considering that sales will happen, it is not going to happen. You either make it happen or you don't make it happen. You know, right now, your competitor is taking some action right now. What's your move? What are you doing right now? Okay, I want to show you this video. It's a very interesting video, and you will get the message. Let's see. You stand around and watch all the opportunities go by. They sit there. Oh, I'm getting ready. Bert's getting ready. Rick's getting ready. Oh, maybe the next one. Maybe the next one. Oh, fuck, no, I'm tired now. Maybe the next one. And there comes somebody like me. Just jumps on the fucker and eats it. Maybe the next one, Ray. Who in this room is that male lion? And the truth of the matter is the female lion does all the fucking hunting. So if you keep thinking and if you keep waiting, okay, अब करूंगा मैं, ऐसा कर लूंगा मैं, अगली बार कर लूंगा मैं, you know, ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही हो, आप कर लोगे, बट आपको मालूम नहीं है कि अभी इस वक्त जब आप सोच रहे हो तो मार्केट के अंदर एक्शन चल रहा है, हलचल चल रही है। मैं आपको एक कॉन्फेशन शेयर करना चाहता हूं जो मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने शेयर किए हैं मेरे साथ जब वो मेरे मेंटरिंग में आए। उन्होंने अपने को ओपन अप किया और एडमिट किया। what they told me is this very interesting thing, and I want to read word by word. He said, sir, throughout the USC program, I was thinking that let me first hear what you have to say, and then I'm going to do the implementation. Okay, first let's finish the whole 7 session, then I'm going to roll up my sleeves and get into the real implementation. Okay, and today, when the program is over, I realized that I should have taken actions along with you. So now what I'm trying to make you understand is that market rewards action. You have to
roll up your sleeves and be in the action mode whenever the opportunity comes. Is it making sense to you? Now I'm asking those questions, those people, 21 people who were able to fill up the form. How are you feeling, guys? How are you feeling, guys? Those who were was able to fill up the form. Amazing. Good. Wow. Winner. Yes. Good job. Awesome. Achieved. I missed by one. Exactly. Empowered. Now tell me, those who were staring at the screen or could not get through that link, how are you feeling right now? Be honest about it. How are you feeling right now? FOMO, left out, slow, stupid, dumb. Good. Awesome. Okay. So do not give meaning to your feelings. Just be curious about it. Magical things is going to happen. Okay. So I said in the beginning, today is a foundational day. Today I will give you basics, which is very powerful. Basics ही सही नहीं होगा तो जो आगे मैं बताने वाला हूं तो बात नहीं बनेगी. ओशो ने अपने किसी टॉक में कहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पे द्वार की बात कर रहा हूं, जब महल में जाओगे तो आप ये ना पूछना द्वार कौन सा द्वार. So stay focused, stay curious. Now we come to the orientation part, where I'm going to tell you the topics, flow, schedule, house rules, all those things which you want to know. Okay. Now, as I'm going to tell you about this orientation, sometimes market gives you another opportunity. My question is, when market is giving you another opportunity, what are you going to do this time? Are you going to sit and analyze and keep thinking and smiling and thinking and looking? What are you going to do, ladies and gentlemen? Are you going to still look for the ways to click on the screen, or are you going to jump and do and take your share? Let me know. While you are sitting and thinking, we have got 19 people who have claimed that big box. 31 people. Wow. Good job. Out of 750 people. Awesome. Now, I want to ask you, those people who could not make it happen. How are you feeling, guys? Exactly. How to click, how to go there. My question to you is how these people figured out. That's what I'm trying to make you understand, ladies and gentlemen. So the power principle for all of you, make a note in your notebook. Market rewards action, not a philosophy, not thinking, not planning, not this, not that. Market does not discriminate. I want you to understand what big brand can't do, you can do it. All you have to do is what? Show up. एक ही स्टोरी आप चला रहे हो, पता क्या चला रहे हो? आप कह रहे हो बड़ा वाला ब्रांड, बिग ब्रांड के पास मनी की पावर है, मनी की मसल पावर है. ठीक है, बिग ब्रांड के पास मनी की पावर है. लोकल जो लोग हैं वो जीएसटी या वो सब नहीं करते हैं, कैश में हैं, और मैं यहाँ पे सैंडविच बन गया. यही स्टोरी है आपकी. बट जब मैं बिग ब्रांड से मिलता हूं तो मुझे कुछ और कहते हैं, जब इनसे मिलता हूं कुछ और कहते हैं. बॉस, कस्टमर कहता है शो अप करो, पैसा मैं आपको दूंगा. अंकित कह रहा लिंक कहाँ है? अंकित, you have to watch the recording and you laugh at it and you will find out. All right, guys. So is this making sense to you? Okay. So let's begin the orientation part. We have a lot to cover. We will be finishing today's session around 9:50. So nothing here is theory. Anything and everything which I am going to share with you is a practical thing. So it is a purely practical program and there is a work involved. हर पल हर क्षण आपको इसके अंदर कोई ना कोई काम है. आप सोच रहे हो कि पार्ट टाइम तरीके से मैं कुछ कर लूंगा तो आपको पार्ट टाइम वाले रिजल्ट मिलेंगे. ओके, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू इज टू टेक बेबी स्टेप्स. परेशान नहीं होना, बेबी स्टेप्स लेना है. वन स्टेप एट अ टाइम. You will progress. Okay, now you might have seen this or similar images on WhatsApp being circulated and on Monday mornings. I want to tell you this. Comfort zone is a beautiful place. But nothing ever grows there. ठीक है, अगर आपको आपके जीवन में गति नहीं मिल रही है तो आप देखना कि आप अपने शल में बैठे हुए हो.
शेल में बैठे हो, आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रोथ को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। मेक सेंस? सो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इतना अनकंफर्टेबल करूंगा, इतना अनकंफर्टेबल करूंगा, इतना अनकंफर्टेबल करूंगा कि आप ग्रोथ जोन में आ जाएंगे और जिंदगी में वापस कंफर्ट जोन जाने का रास्ता भूल जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, I am going to make you so much of uncomfortable. And you know what? You will be proud because uncomfortable is new sexy. I want to tell you that, ladies and gentlemen, I'm not here to impress you, and you are not my customers. I'm a teacher who produces results. I'm a Chanakya who produces results, and you are a student. So my job is to push you, push you, push you, push you, repeat the same again and again till the time you say, okay, I get it. Does it make sense? So I'll make you uncomfortable so much that you cannot go back to, because when you are uncomfortable all the time, my wife says, अरे तुम कभी शांत भी तो हो लो। मैं कहता हूं कि अगर शांत हो गया तो ग्रोथ को भूल जाते हैं। 24/7 uncomfortable meaning 400 to 4000% of growth. ये समझो, अगर MIS सीखनी है तो ये वाला सीखो, ये वाली मैट्रिक सीखो, वो वाली नहीं कि 5%, 10%, 50% कैसे करनी है। Is this making sense, ladies and gentlemen? Awesome, wonderful. Now, the way child writes to learn A, B, C, likewise you will be learning new way to sell. New way to sell. Now, the more you work, more I work with you closely. If you come to me with an empty hand, I'm going to show you empty hand. If you come to me with an empty hand, I'm going to show you empty hand. Ladies and gentlemen, if you work, I'm going to work. I'll bring my students. I'll bring case studies after case studies. If you ask a question without doing the homework, then I'm not going to reply. You will just see a smiley sent to you through WhatsApp, through my face, but I'm not going to reply. Is it making sense? So now, in your learning this new sales science, there are 3 barriers that will come in your way, and I want you to be mindful. अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी टूर पे जा रहे हो, किसी वेकेशन पे जा रहे हो, किसी जर्नी पे जा रहे हो, अगर आपके गाइड ने आपको बता दिया कि 3 जगह पे आप फंस सकते हो, will you thank the guide or not? So there are three barriers which is going to stop you from taking value from the program. First thing is this, that this does not apply in my business. Baap re baap. Oh ho. This doesn't apply in my business. ये सबसे बड़ा वायरस है जो गेम खत्म कर देता है। आप मुझे एक बात बताओ, समझाने के लिए पूछ रहा हूं, ओके? How do you know this doesn't apply in my business? How do you know that? आप अपने फिक्स व्यू पॉइंट पे बैठे हुए हो और वहां से सोच रहे हो। I want you to replace this with a new statement called how can I apply in my business? If you start asking this question, you will start getting what? New answers. Sooner or later, you will arrive at that answer which you are looking for. Is it making sense? Okay. So this doesn't apply in my business. Don't use that. I want to share one success story by one of the student, one of the captain of Get Over Book, Chetan Jain. Amazing student, amazing friend. I just love him. And the kind of results he has produced, you know, it's appreciable, commendable, and he'll be coming on the screen sometime in this journey, and we'll be sharing his story and teach you also the concept he got. He says, last year I joined Ultimate Sales Engine to support Akshar, meaning he came as a volunteer. And he said, I was very doubtful and skeptical how this 4-phase thing will work out in my B2B business. He came with this mindset. He did his best to become a good student. He applied everything. And today he says, my whole business runs on 4-phase selling method. He got all the 20-50 people in the sales team. They use 4-phase. They don't use anything else. And he'll be coming on the screen in coming sessions, and he'll be showing you what he's doing. Maybe his slides, his presentation scripts. Akshat Bansal, he's into luxury door handles. He has a showroom where people come. His showroom is built on 4-phase science.
So luxury things can be sold with this system. You know, Sanjay Narwal, he is selling animal, जो जानवर होते हैं उनकी दवाइयां बेचते हैं और उनके जो कस्टमर हैं वो किसान हैं. He is using this sales science to sell to them. Amit Bajoria, Anand Bajoria, they have got 8 companies. They sell different type of machines to shoe manufacturers, and they are able to take value from this. AC Sood, he is selling Kangen water through network marketing, and he is able to use 4-phase to sell Kangen water. I never thought that somebody can sell this e-rickshaw or these rickshaws through 4-phase, and you will hear from Dinesh also as we go along. All the coaches, consultants, advisors, Randir Bhalla is a coach advisor. He's using 4-phase to sell his product and services. So what I'm trying to tell you is this, ladies and gentlemen, the ultimate sales engine concept works. It has worked in many industries. It will work in your industry also. So hang on, keep doing the work which I'm asking. And I want to tell you, you have been amazing student. You have the way you are participating, the way you are engaging. I feel like exhaling, giving you more. All right. So second barrier that will come in your learning is how this one sales system can work in such diverse industry. I'm in the business where we have got only one customer, government, or somebody says I'm a 40,000 crore company. How this sales system can work? Well, I want to tell you that this sales system is not built on hacks. It is built on customer psychology. Once you understand that, then you can adapt this sales system in your business and you can get the orders which you want. Is making sense, everyone? Okay. So this applies to all the industry. Now, one story. How many of you have heard of this story called 6 Blind Men and Elephant? Have you heard of this story? Anyone? Okay, good. I'll tell you. So 6 blind men, they have never seen in their life, you know, how elephant looks like. So they have heard of elephant. Okay, elephant ek जानवर है, ऐसा होता है, वैसा होता है, whatever. So they wanted to learn about elephant. So what they did was they were blind and they reached to elephant, and they were allowed to touch only one part of the elephant. Okay. So then somebody who touched one part, for example, trunk, that person said that, oh, elephant is like a snake. And then somebody who touched teeth, then elephant is like a spear. And somebody who touched this whole leg, oh, it's like a tree. And then it's like a rope, like a wall, like a fan. My point is, have I taught you this concept yet? Have I taught you this concept yet? Have I told you the science yet? If I have not told you, then how do you know that this system will not work in your business? How do you know that? Is it making sense? Yes or no? Okay. Third barrier is I already know that. I have seen in this webinar, I have seen in that course, I already know that. Once again, I have not taught you, so you don't know. Okay, so please be curious. Now, we have got a community here. I believe in community, not in a dictatorship where somebody who's at top taking out his belt and telling you, "Kar lo." No. So we have got my team here. We have got past participants from Get Overbooked and Ultimate Sales Engine. And we are here to lift you along, but you will have to do your share of work and practice. आप अपना काम थोप नहीं सकते हैं मेरे ऊपर या किसी भी कोचेस के ऊपर, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर. चलिए, अगर आपको ये क्लियर तो आगे चलते हैं. मैं आपको पूरे करिकुलम का एक मैं आपको 30,000 फीट ओवरव्यू देता हूँ पूरे करिकुलम का, कि आपने किस प्रोग्राम के अंदर आपने साइन अप किया है, किसने आपको यहां धकेल दिया है, किसने आपको रेकमेंड किया है, उसके बारे में पूरा का पूरा आपको मैं ओवरव्यू देता हूं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you have signed up for 7 live sessions over Zoom. 7 live session over Zoom. Okay, ये प्रोग्राम जो है 6 PM
से लेके 8:30 प्लस चलता है, sometimes 9:30 whatever, and this will happen on Saturdays starting from today. Is this clear? Apart from these things, you will get date with 4 phasers. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कैसे? जिन लोगों ने, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिस एग्जांपल के लिए नवीन है, नवीन into kurti business. Now anybody from retail business, when Naveen is going to share his examples, his sales script, how he has done it, you will get quick templates, quick answers to so many questions which will take time. So जितने भी pro जिन्होंने इसको यूज किया है और जिन्होंने पैसे बनाए हैं, they are going to come on the screen and they're going to share with you. Now, second thing is I will also decode how I sold, how I use this concept in the Sales on Steroid program. I will decode few concepts for you, and that is going to be mega FLB. I want to tell you this. I want to tell you this. Dunia mein, I am yet to find somebody who is going to teach you his secret sauce. मैं ऐसा मानता हूं कि मैं एक वो शेफ हूं जो खाना जो बनाता हूं वो खाता भी हूं और खिलाता भी हूं. मैं वो नहीं हूं जो खिलाता कुछ और है, बनाता कुछ और है. बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते खुद कुछ भी नहीं है. मेकिंग सेंस. बहुत सारे लोग बात करते हैं पैसे की, बट खुद पैसे का हिसाब किताब नहीं रखा हुआ है. सो आई वांट टू बी सुपर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कि मैं कैसे कन्विंस करता हूं अपनी ऑडियंस को. आई विल शो यू एंड दिस विल ब्लो योर माइंड एंड दे विल से, ओह wow, this is very interesting phenomena. Is making sense? Then comes the 4-phase challenge. 4-phase challenge का मतलब ये हुआ, once you understand the whole sales concept, how do we sell using 4-phase, you would be paired in group, and in that group you are going to deliver your sales pitch and the person will be listening and then the person will be delivering. So it is going to be like a challenge between all the 1,000+ people, and it's completely fun and it's going to transform you. And सबसे बड़ी चीज इस प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम एक तरफ और अल्टीमेट सेल्स इंजन जो कि 1 full day लाइव इवेंट है, वो ये एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगा. तो जैसे कहते हैं ना, आदमी अपना मैजिकल ट्रम्प कार्ड रखता है, ये मैजिकल ट्रम्प कार्ड है. एवरीबडी प्लीज टेक अ नोट ऑफ डेट. इट इज हैपनिंग ऑन 21st of October, न्यू दिल्ली, JW Marriott. ठीक है, इसके अलावा कोई डेट नहीं है, कोई रिप्लेस नहीं है. आपको पेमेंट लिंक मिलेगी, फूड का जो भी खर्चा आएगा 5,000 8,000 रुपए जो भी आएगा वो आपको मिलेगा, आपको वो पे करना है. अब मैं आपको एक चीज शेयर कर देता हूं. मैं आपके रीजंस होंगे, मैं ट्रैवल पे हूं, मैं वेकेशन पे हूं, आई कांट कम, कैन यू गिव द रिकॉर्डिंग. वेल द आंसर इज नो. सिंपल आंसर इज नो. नाउ उसके बाद ये भी बता दूं मैं आपको, द मोमेंट यू गेट द पेमेंट लिंक यू हैव टू इमीडिएटली एक्ट ऑन इट, सिक्योर योर सीट. व्हाई? बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं 40% लोग तुरंत कर लेते हैं, बाकी के जो लोग हैं वो आराम से करते हैं. बताता हूं, करता हूं, करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा. मैं आपको बताना चाहता हूं 2 चीजें. एक तो ये कि जब लिंक मिलेगा तब नहीं करोगे तो जो पैसे हैं वो 2x हो जाएंगे. दूसरी चीज, सीट मिलने की गारंटी नहीं होगी. इस चीज का मैं आपको वादा कर देता हूँ. लास्ट ईयर करीब 150 लोग जमीन पे बैठे थे, 150 लोग जमीन पे बैठे थे. इसके बारे में मैं आपको अगले सेशन पे बात करूंगा. ओके, ऑसम. नाउ हम अपने प्रोग्राम के साथ कोई ना कोई छोटा सा वेलकम किट भेजते हैं. सो आई होप आपको ये यूजफुल किट मिल गया होगा. अगर नहीं मिला तो ये अभी हवा में है और आप तक पहुंचने वाला है, और फिर भी नहीं मिला तो हम दोबारा भेज देंगे. आपको पेशेंस रखना है. इस किट से ऐसा नहीं है कि आपकी सेल्स रुक जाएगी. सो हैव पेशेंस, यू विल गेट इट. Okay, and those people who got it, they can share the unboxing, they can share how they have designed or set up their desk. It would be good to see all those things in the group. Now I want to tell you this, हमारा जो USC ग्रुप है, जो गेट ओवर बुक कम्युनिटी है ना, ये ना सोलफुल लोगों वाली कम्युनिटी है. यहाँ पे मैनिपुलेटिव लोग नहीं मिलेंगे आपको, है ना. आप एग्जांपल देता हूं मैं. हमने 1300-1400 डब्बे पैक किए हैं, और आपको जान के हैरानी होगी, ये डब्बे मैंने पैक नहीं किए, और ये किसी फैक्ट्री ने, किसी एजेंसी ने, किसी आउटसोर्सिंग लोगों ने पैक नहीं किए. आपके जैसे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर इस क्लास में आए थे, दे वांटेड टू वॉलंटियर, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट people have flown outside from Delhi. They have come to do this activity. I'm going to show you a few pictures, very few pictures. Some people brought their drivers, some people brought their staff, you know what not. Sanjay Bingani flew from Ahmedabad, and just see this.
तो बहुत ही प्यार से किया गया। ये वाली बात मैं क्यों दिखा रहा हूं कि बॉस प्यार करने वाली कम्युनिटी है, नफरत छोड़ो, प्यार की आंखों से आके देखो, गेम बदल जाएगी। सो दिस इज द लास्ट बॉक्स आवर टीम पैक्ड। So big hand to hold everyone who has contributed in this box packaging. It is not an easy job to dispatch these many boxes in short span of time. Okay. Now, what you don't know is that all the boxes which you have received and you will be receiving has been touched and packed by my son also. He came from school every day. He put that USC live ticket in that box for all of you. He has sent his love and blessings to you in whatever way. And we have got Dhani. I don't have her photo. She's a 10-year-old girl. She has contributed in box packaging. So thank you guys for doing this. I love you. I love you. I love you. Amazing, amazing, amazing. Now let's look at the curriculum. कि स्पेसिफिकली अक्षर आप क्या क्या बताने वाले हो, क्या क्या सिखाने वाले हो। इस स्लाइड को थोड़ा धीरे लेके चलेंगे बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा टेक्निकल एलिमेंट भी आपको दिखाई देगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ना सेल्स और मार्केटिंग के बेसिक्स पे बात करेंगे, फाउंडेशन पे बात करेंगे। वो वाला बेसिक्स नहीं कि एक्सेल फाइल में एनबीडी का क्या परसेंटेज होना चाहिए, वो बहुत ही एलिमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैफिक इंजन के बारे में कि लोगों को पकड़े कैसे, लोगों को लाए कहां से। फिर हम बात करेंगे मास कंट्रोल बेट, क्या बाजार में मैसेज डालूं जिससे कि वो बंदा बोले अरे ये बात आपने कब से कर दी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेट्स टॉक, है ना। एंड देन दिस विल हैपन इन फर्स्ट 3 वीक्स। देन वी आर गोइंग टू लर्न 4 फेज पार्ट 1, हाउ टू बिल्ड योर अथॉरिटी, उस पर बात करेंगे। देन पार्ट 2, कैसे आप कन्विंस करो अपने सामने वाले आदमी को। फिर आप अपने टीम को सिखाना है, टीम को तुरंत सिखाने की जरूरत नहीं है। एंड दोज पीपल हु हैव ब्रॉट योर टीम हियर, आई वुड रिक्वेस्ट यू सिट विद देम, डू द ड्रिल्स, डू द एक्टिविटी, मेक देम एक्सपर्ट, and you will hear their objections. You have to annihilate them, and if they have objection, we can ask someone from our team to address those things also. Okay, so then you will have a date with 4 phases. And then when you are doing 4 phase challenge, आपकी रिहर्सल होगी, डिलीवरी होगी, आपका सेल्स पिच आप करोगे। फिर पूरे प्रोसेस में कोई ट्वीक्स करने की जरूरत है, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, वो करेंगे। और आपके करोड़ों क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि जो आपको आंसर नहीं हुए हैं। ऐसा होगा नहीं, बट आंसर नहीं हुए उसको करेंगे। और कोई एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग की जरूरत है वो भी करेंगे। लेकिन ये सब होगा आपका 4 से 7 वीक में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ग्रुप की एनर्जी के ऊपर मैं अपना एक्सेलेशन करूंगा। ग्रुप अगर एटीट्यूड में और फिक्सेशन में रहेगा तो मैं वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। तो हम सबको ग्रुप की तरह काम करना है। मैं के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आना है, हम के कॉन्टेक्स्ट में आना है। इज इट मेकिंग सेंस? दूसरी बात, खासकर उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि क्लास कितनी बोरिंग हो गई है, उनके लिए सेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस प्रोग्राम के अंदर, वैसे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। यानी कि आपको जो एलबी मोमेंट है, आहाज मोमेंट है, वो हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो डबल होना शुरू हो जाएगा। आपका जो ब्रेन है वो अंदर से ऐसे शेक हो रहा होगा कि ओ माय गॉड ये भी है, ओ माय गॉड ये भी है, ओ माय गॉड ये भी है, ओ माय गॉड ये भी है। You are going to experience something which you have never experienced. Trust me, 2 महीने बहुत ही एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं मैं आपके साथ। Is making sense everyone? So, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंटेंट कब आएगा, धंधे के बाद कब करेंगे, उनके लिए था ये, ठीक है। अब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, थैंक यू संचित, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है ना। ये स्पेशल गिफ्ट उनके लिए जो बैठे हैं यहाँ पे जो नहीं बैठे उनके लिए नहीं। कितने लोग गिफ्ट के लिए रेडी हैं? किसी को इंटरेस्ट है स्पेशल गिफ्ट के लिए? एनीबॉडी इंटरेस्टेड हियर? ओके, गुड। ओके, ये वाकई में स्पेशल गिफ्ट है और इसको आप पैसे से कभी भी नहीं खरीद पाओगे। कोर्स को तो शायद आप खरीद लोगे, आपने इस कोर्स में अपनी सीट तो खरीद ली, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं खरीद पाओगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी। चलिए, तो गिफ्ट क्या है कि आपको मैं स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस देना चाहता हूं। स्पेशल प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, स्पेशल प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। अब ये स्पेशल प्रैक्टिस सेशन कब होगा? ये स्पेशल प्रैक्टिस सेशन वेडनेसडेज को होगा। कब होगा? वेडनेसडेज को होगा, 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, प्लस माइनस टाइम जो भी लगेगा, ठीक है। और इस वाले वेडनेसडे से नहीं, नेक्स्ट वाले वेडनेसडे से मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, आई वांट यू टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
We have got a student, Gaurav Soni, Narjit Soni. They're from Germany and Noida. You know, they have gone through my recording 6 to 9 times, and every time when they hear, they say, "Oh my God, we never saw this thing from this angle," and that changed them. Okay, so I am giving a space of 7 days so that you can watch recording, you can just comprehend everything, you can come up with their questions in your mind, and then from next Wednesday onwards, we are going to do these classes. Is there fees for it? Well, there is no fees for it. What is the prerequisite is a curious mind, an open mind, a smiling face, and mojo to confront. Mojo का मतलब motivation. Mojo to confront something that is not serving you now. मतलब क्या? आप जैसे ही इस क्लास में आओगे तो बहुत सारा फिक्स माइंड के साथ आओगे और आपका एक ही सवाल होगा कि मेरे को 10x सेल्स करनी है। आपका सवाल यही होगा। आप बोलोगे मेरा ब्रांड दिखता नहीं है, कस्टमर ये बोलता है, ये सारे सवाल होंगे। एक्चुअली में ये सारे सवाल जो है अच्छे सवाल नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, सिम्टम है। क्या है? सिम्टम है। जब तक कि हम जड़ पर नहीं जाएंगे, जब तक कि हम रूट पे नहीं जाएंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम हमेशा एक विशफुल थिंकिंग बन के रह जाएगी। मैं आपसे एक बात करता हूं, आप समझो बात को, अगर लाइफ में हर चीज ठीक हो, खुश हो, तो ग्राफ ऐसे है ना हर चीज का, क्योंकि लाइफ का ये नियम है, लाइफ का नियम है। तो आपका लाइफ का ग्राफ ऐसे क्यों नहीं है? ऐसे क्यों है? क्योंकि रूट पे काम नहीं हो रहा। मेक सेंस? तो ये स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में हम सेम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा देखेंगे, दोबारा समझेंगे। मेक सेंस? अब इसके अंदर सुपर स्पेशल क्या है? इसमें सुपर स्पेशल ये है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने इस साइंस को यूज करके पैसा बनाया है, वो आपके साथ बैठेंगे और आपको प्रैक्टिकल आंसर देंगे कि देखो मैंने ऐसे किया, मेरे बिजनेस में मैंने इसको ऐसे अडॉप्ट किया, अक्षर सर ने ऐसा बोला था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला मैं अमेंडमेंट लेके आया, तो मेरी गेम चेंज हो गई। सो यू आर गोइंग टू गेट, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड, दे आर as mature as businessmen as you are. So for example, let's say you are a 10,000 crore company businessman, and somebody who is teaching you is, let's say, 2 crore rupees man. Do not judge that person, because he has gone through this whole training with me. He knows that point and he will teach you. Is making sense to all of you guys? So आपको मिल क्या रहा है? आपको मिल क्या रहा है? आपको 7 सेशन जूम पे मिल रहे हैं, 7 सेशन जूम पे मिल रहे हैं, और प्रैक्टिस सेशन करें तो आप 14 सेशंस हो गए हैं आपके। कितने हो गए? 14 सेशंस। और टाइम भी आपका 6 से 9:30 के आसपास हो गया है। तो कुल मिला के आपको अपना शेड्यूल ऐसे बनाना होगा। सो फार सो गुड। अब एक बात बताइए, हर गेम के अंदर कोई ना कोई रूल होता है कि नहीं होता? अगर गेम के अंदर रूल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ट्रैफिक लाइट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? इन द चैट बॉक्स एवरीवन प्लीज एक्सेल। बेसिक्स का एक्सेलेशन ही तो करना है, बाकी तो एक्सेलेशन कर लेते हैं। All right, good job. Okay, so हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में भी कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स मैं आपको लाउड एंड क्लियर कर देना चाहता हूँ। लाउड एंड क्लियर। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फुल केओस चलेगा। सबसे पहली चीज तो ये कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, कोई थ्योरी प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर काम करेंगे। दूसरी चीज, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम का मतलब आपको क्लास को लाइव अटेंड करना पड़ेगा। आप प्रॉक्सी नहीं लगा सकते हो, आपको क्लास में आना पड़ेगा, जूम वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, नोटबुक में काम करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू रीविजिट द कॉन्सेप्ट। आप ये नहीं बोल सकते हो अच्छा आगे बता, अगला कंटेंट दे। यू कांट डू दैट, एंड यू हैव टू डू द होमवर्क एज यू विल बी गिवन एंड सजेस्टेड। सो हैव पेशेंस, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, जस्ट गो विद द फ्लो। अब जो अगला पॉइंट ये है, सभी लोग अभी आप किस समय रिवाइज करोगे और किस समय होमवर्क करोगे, आप अपना टाइम ब्लॉक कर लो, ठीक है? और ब्लॉक करके आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं संडे को इतने बजे से इतने बजे तक मैं संडे को काम करूंगा, रिवीजन करूंगा, या मंडे करूंगा, या वेडनेसडे करूंगा। सो ऑल ऑफ यू पुट दैट इन द चैट बॉक्स,
कि किस समय में अपना आप टाइम ब्लॉक कर रहे हो everyone, because we are going to take out that number from the Excel sheet from the chat box, and we will have the triggered messages कि बॉस कि आपने बोला था आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. So do that everyone. और मैं आपको फिर से बता देता हूं मैं, if you are not writing anything in the chat box, I know that you are not doing that. Now here is the point. When you are not doing that, it means you are not exhaling, and you are not exhaling, then you will be reaching to a point called data poisoning point. And the moment you will have a data poisoning point, you will start judging, you will start hating, you will start. Trust, you are adult, mature entrepreneur, already successful. You take a call. I can't go beyond this. Okay, good. Now, next question is, thank you for sharing, guys. Next question is, if somebody is not following the rule after agreeing, how do we handle that? How do we handle that, everyone? How do we handle that if somebody is not following? If somebody is not following. Okay, penalty, presentation, help him. Okay, good. So in a moment, I'm going to send all of you into a breakout room. जिनको जूम का ब्रेकआउट रूम नहीं पता, उसका मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और आपके सामने में एक लिंक, एक ऑप्शन आएगा, उस पर यस करेंगे तो आप उस जूम रूम में आप चले जाएंगे. ठीक है. सो एक ग्रुप में मान लेते हैं 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे. आप सबको अपने ग्रुप में बात करनी है कि कोई भी इंसान अगर होमवर्क नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहा है और सिर्फ इनहेलेशन कर रहा है और एक्सहेलेशन नहीं कर रहा, तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए. तो आपका ग्रुप एक कॉमन एग्रीमेंट पे एक पॉइंट को लेकर आएगा और फिर वो हमारे को प्रेजेंट करेगा यहाँ पे. ठीक है. अब मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कर दूं आपको. पहला पॉइंट, आप ग्रुप में जाके इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अपने आप को. हेलो, मेरा नाम ये है, मैं ये बेचता हूँ, मेरा ये विजिटिंग कार्ड है, ले लो, मुझे ऑर्डर दे दो. वो नहीं करेंगे, नंबर 1. नंबर 2, किसी भी तरह की मोबाइल शेयरिंग, नेटवर्किंग नहीं करेंगे. हमारे यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है, हमारे यहाँ पे सोलफुल कम्युनिटी है, जहाँ पे कि इंसान आपकी प्रॉब्लम से पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़ा हो जाता है. Is making sense? So no networking, nothing. You just trade start with this. तीसरी चीज, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आदत है लीडरशिप पोजीशन लेने की, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुप रहते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं. आपको दोनों को माइंडफुल होना है, सबको मौका देना है, और जो नहीं बोलते हैं उनको स्पीक अप करना है. इज दिस क्लियर टू यू? और जो लोग जूम रूम पे नहीं जा पा रहे, तो नहीं जा पा रहे. ठीक है, वो आपकी विलिंगनेस है कि आप कैच नहीं कर पाए. ठीक है. सो लेट्स गो, ऑल ऑफ यू, and this is, we meet in 5 minutes. Crores. So 3 crores is the average salary of a prompt.
All right, welcome back, everyone. So, have you decided? Okay, so in the chat box, everyone, please write down in the chat box, what have you decided if somebody is not following the rules? Penalty, सबका साथ, सबका विकास. Not decided. Help, talk with him. Okay, good. Okay, good. Okay, good. I got it. Okay, good. So, अभी I keep it open. हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे. ठीक है? Let's see how it goes. फिर एक रूल बनाएंगे जो कॉमन होगा सबके लिए. Okay? Okay, let's go. So now, we have got the WhatsApp group here. And WhatsApp is here for two things. One is your important updates, and second thing is to share wins. Nothing else. इसके अलावा अगर आप कुछ भी डालोगे, कोई गुड मॉर्निंग मैसेज, कोई न्यू ईयर मैसेज, कोई पीडीएफ, कोई भी वीडियो, सर आपने जो बात बोली थी ना, बिल्कुल वही वाली बात है, ये मैं शेयर कर रहा हूं. That will be asked to withdraw. We will be deleting that. So all are requested to keep WhatsApp clean and positive all the time. No self-promotion of any kind, no networking, no sarcastic comment, only meaningful conversation. ठीक है? और आपका कौन सा फोन नंबर जाएगा जिसको आपने रजिस्टर किया वो वाला. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा वाइफ का नंबर ऐड कर दीजिए, इसका नंबर ऐड कर दीजिए. It is not going to happen. Is this clear to you guys? So keep the WhatsApp clean and meaningful conversation. बीच बीच में एनर्जी को बिल्ड करने के लिए मैं कोई एक्टिविटी कराऊंगा, कुछ कराऊंगा, so we can share gifs and all those cartoons. That is fine. But otherwise, keep it clean, keep it clean, keep it clean. Does it make sense? Now, कम्युनिकेशन हम आपके साथ कैसे करेंगे उसके बारे में बताना चाहता हूं. हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज ऑल दी मल्टीपल चैनल पॉसिबल. हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे, मेन ग्रुप पे बताएंगे, कोई भी चीज बतानी होगी. देन वी विल सेंड यू पर्सनल मैसेजेस ऑल्सो. देन वी विल ईमेल यू ऑल्सो. देन वी विल सेंड SMS ऑल्सो. जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे वी विल सेंड यू फिजिकल लेटर ऑल्सो. कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे कम्युनिकेशन के लिए. तो आपका कोई मैसेज मिस नहीं होगा. आपको सिर्फ अवेयर रहना है, हाँ जी मेरे को मेल देखनी है. ठीक है? ऑल ऑन योर रजिस्टर्ड नंबर्स एंड ईमेल आईडी. इसका ध्यान रहे. नाउ फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और एनी टेक्निकल सपोर्ट यू हैव टू व्हाट्सएप. यहाँ पे वर्ड क्या बोला? व्हाट्सएप. आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है. एक गिवन पॉइंट इन टाइम में 1400 लोग कॉल करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू हैव टू व्हाट्सएप पायल at this number or Pankaj at this number. You have to WhatsApp. Okay, they are going to be your one point contact for everything from invoicing, recording access, getting your question answered by me. अक्षर से ये पूछना है, वो पूछना है, वो सब कुछ they are going to take care for you. Okay, now here is a very important distinction I want you to understand. A, do not call. We are not going to help you on the call. We will be using WhatsApp all the time. जहां जरूरत पड़ेगी we will call you back. Number 1. Number 2, आपको ये बात समझनी पड़ेगी. We are here to support you at every step of your way. ठीक है? So मैं आपसे एक बड़ा ह्यूमन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अलाउ माय टीम टू रिस्पॉन्ड within 24 hours, not in 24 seconds. लोग क्या करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं. They will send message to me, then send to Payal, then to Pankaj, then to Sanjay, then to Palak, then to everybody. And then they will say कि आपकी टीम से कोई जवाब नहीं आता. ठीक है? So I want you to have patience. यहाँ पे हम आपको सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं, but in a very specific way. So far so good, everyone. Okay. अब यहाँ पर आप बैठे हुए हो और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ लोग चले गए हैं. तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन धीरे धीरे कम हो रहा है. तो सम टाइम मार्केट इज गिविंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी. मेरा सवाल है, इस बार जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तो आप क्या कर रहे हो? इस बार जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तो आप क्या कर रहे हो? इस बार आप बैठ रहे हो, सोच रहे हो लिंक के बारे में, या कुछ कर रहे हो फाइनली?
इस बार आप क्या कर रहे हो? Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Are you going to still think, plan, analyze, do something, or you will take action? Because market rewards action. Market does not discriminate. All you have to do is you have to show up. Show up. Can you see this? कि अगर आप लेट में आओगे तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं, कितने लोग खड़े हो जाते हैं उस चीज को क्लेम करने के लिए. डिड यू गेट दिस व्यू पॉइंट कि अगर आप लेट अगर हो गए तो आपका जो शेयर है, आपका जो पाई है, वो योर लेके जाएगा. सो अगेन एंड अगेन आई विल रिमाइंड यू दैट बैठने से काम नहीं बनेगी. किससे काम बनेगी? एक्शन लेने से. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ धंधे की जिसका आप वेट कर रहे हो कि पैसा कैसे आएगा, है ना, सेल कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में. तो दिस इज एक्सरसाइज कॉल्ड मनी मैथ. मनी मैथ. ठीक है, मनी मैथ को हम एक काम करते हैं, वी टेक अ शॉर्ट 10-minute break and then we start. Is it okay with you guys, everyone? So 10 minutes and then we come back and then we do money math and we'll finish by 9:45 today.
Okay, if you are back, let me know in the chat box. You are back and ready. Beautiful, awesome, awesome, awesome. Now, once again, today it's a fundamental and basics. And what I'm going to teach you on money maths is also basics, meaning you must have seen this, but I want all of you to see this from a fresh lens, completely fresh lens, okay? You will gain some new viewpoint. So, business में अगर हम बात करें, तो जो money है, वो money, एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट के रूप में हमारे पास हमारे अंदर आता है, करेक्ट है? ये जो मनी है ये कहां से आता है, ये प्रॉफिट कहां से आता है? जब हम सेल करते हैं, इज मेकिंग सेंस? सेल करते हैं, और सेल कहां से होती है? सेल होती है कस्टमर से। कस्टमर को अगर हम समझें तो कस्टमर कौन है? लोग। यहाँ पे लोग जो है ना कई तरह के होते हैं, इसको समझिएगा प्लीज। कॉन्टैक्ट, प्रोस्पेक्ट। जब प्रोस्पेक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ? कोई भी इंसान जिसको आप जानते हो। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस पूरे लिस्ट में आपके मतलब का कोई इंसान, वो प्रोस्पेक्ट है। और जब प्रोस्पेक्ट यस बोलता है तो उसको हम बोलते हैं लीड। यस का मतलब वो इंक्वायरी देता है। जब वो पैसे दे देता है तो वो सेल बन जाता है, यस और नो। जब वो बार बार खरीदता है तो उसको हम फैन बोल देते हैं। इज मेकिंग सेंस? सो हम जो ये कॉन्टेक्स्ट, हम ये लोग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे मनी मैथ को, ठीक है? एक नया पर्सपेक्टिव है, ठीक है? आपने ऐसे शीट्स, एक्सेल फाइल्स, ऐसी चीजें देखी होंगी। मैं आपको मोस्ट सिंपल व्यू पॉइंट दे रहा हूं मनी मैथ के ऊपर। इस एग्जाम्पल को स्लो समझेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिकॉर्डिंग इस पोर्शन को देखेंगे दोबारा से, टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। हमें क्या चाहिए? हमारे को क्या चाहिए? हमारे को मनी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट मनी तभी आएगा जब कोई माल बिकेगा, ठीक है? जब हमारे पास सेल होगी मेरे प्राइस पे, मेरे टर्म्स पे, करेक्ट है? सो अब एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि आपकी 2 करोड़ की सेल है। कितनी की सेल है? 2 करोड़ की टोटल सेल है साल की। सिर्फ एग्जांपल की बता रहा हूं मैं आपको, और इसको सिर्फ एग्जांपल की तरह ही देखिएगा। उसके बाद आपने ये 2 करोड़ आपके पास 1000 कस्टमर से आए, और मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं ले रहा हूँ, कस्टमर ले रहा हूँ समझाने के लिए। सिर्फ 1000 कस्टमर है, उसने क्या बाय किया, कैसे बाय किया, सेग्रीगेशन, वो सब नहीं कर रहे अभी, वो सब अभी नहीं कर रहे, ठीक है? तो हमारे पास अगर 1000 कस्टमर से 2 करोड़ की सेल आती है तो मेरी एवरेज टिकट साइज कितनी होगी? एवरेज टिकट से कितनी होगी? करेक्ट, सो इट इज गोइंग टू बी 20,000। 20,000, ओके? अब अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20% है एग्जांपल के लिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? टोटल सेल का इट इज गोइंग टू बी 40 लाख रुपीज, ठीक है? 40 लाख रुपीज। अब ये जो 1000 कस्टमर हैं, ये जो 1000 कस्टमर हैं आपके पास, ये मान लीजिए 10,000 इंक्वायरी से आई। 10,000 इंक्वायरी से आई, तो लीड से लेके सेल तक का जो कन्वर्जन रेशियो है वो कितना है आपका? वो 10% है। ये बहुत ही सिंपल मनी मैथ है,
ठीक है। अब आपको जो मैं बताना चाहता हूं, जो कि एलबी मोमेंट है हमारे लिए और जो सीखने की जरूरत है, उसको समझते हैं। वो ये है कि सेल लाने के लिए, मनी लाने के लिए, यही मैं समझाना चाहता हूं कि आपको नए लोगों के पास भागने की जरूरत नहीं है। नए लोगों के पास भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप अपने करंट कस्टमर के साथ, अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे हमारे ट्रेड में ऐसा होता है वैसा होता है। रिलैक्स, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को अडाप्ट करेंगे। अडाप्ट करने में दिक्कत आएगी तो बात करेंगे। सो फार सो गुड। तो करंट कस्टमर के साथ, नए की बात नहीं कर रहा हूं, करंट कस्टमर के साथ अगर मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज कर दूं, करंट कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज कर दूं, तो मेरा सेल का जो जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और मेरे बैंक में ज्यादा पैसे आएंगे। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, जस्ट रिलैक्स। दूसरा है, अगर मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा या साथ में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं सेल की या बाइंग की, कस्टमर की, तो भी मेरा बढ़ जाएगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि नए के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम नए के ऊपर काम करेंगे, ये नए पर भी अप्लाई करता है, बट हमारे घर में जितने लोग हैं, जितने कस्टमर हैं, आज तक जितने को सर्व किया, उनसे ही हमने मैजिकल आउटकम नहीं लिया है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट्स से अमेजॉन, समझते हैं इसको। अमेजॉन, अमेजॉन पे आपने 1,000 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1,000 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी, और जब आप खरीदने गए तो उसने आपको प्राइम का, अमेजॉन प्राइम का एक 500 रुपए का आपको एक उसने ऑफर किया कि भाई 2,000 की चीज 500 में मिलती है। तो जैसे ही आपने जो है उसको बाय किया तो क्या हो गया, 1,500 रुपए का ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ गया। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि अपसेल क्या होता है, क्रॉस सेल क्या होता है, आई नो दैट, यू नो दैट, बट इसके अंदर कुछ फंडामेंटल है जो कि आपको नए एंगल से देखना है, तो वहां से देखते हैं। तो आप अमेजॉन में महीने में एक बार जाते हो और अप्रोक्सीमेटली 1,000 का खर्चा करते हो, इस बार आपने 1,500 का कर दिया, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी। इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? करेक्ट गौरव, लो हैंगिंग फ्रूट। अब अमेजॉन ने क्या किया, अपनी कुछ क्रिएटिव स्ट्रेटेजी लगाई, कुछ क्रिएटिव स्ट्रेटेजी लगाई, और उस स्ट्रेटेजी को लगाने के बाद क्या किया, उसने ना आपसे 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 अमेजॉन पे आके बाय करने की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। तो क्या हुआ कि अगर आप महीने में 1,500 करते थे, तो आप 15 दिन में 1,500 करते हो, तो महीने का कितना हो गया, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का हो गया। अब ये किससे हुआ, ये करंट कस्टमर से हुआ। यही आपको समझना है। मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप इस बात से एग्री नहीं करोगे, विच इज फाइन। आपका बिजनेस 50 to 80% करंट कस्टमर से आना चाहिए। इसके पीछे भी लॉजिक है और साइंस है। क्यों, इसके बारे में किसी क्लास में किसी टाइम Q&A कर लेंगे हम आगे। लेकिन आपको यह समझना है कि अगर आपके पास कोई करंट कस्टमर है, अगर आपने उससे फुल वैल्यू नहीं ली है, तो नए के पास दौड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आप ट्रैप में फंसे रहोगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझेंगे इसको। मान लेते हैं कि आपने अपनी लीड की जो इंक्वायरी है उसको मात्र 10% इंक्रीज किया, 10% किया, और कन्वर्जन को 10% किया, एवरेज सेल को 10% किया, प्रॉफिट मार्जिन को 10% किया 20 के ऊपर। तो हमारा जो नंबर आया, नंबर कितना आया, अगर हम बात करें इसका 10% कितना हुआ, 1,000, तो 11,000 हो गया। इसका कितना हो गया, हु कैन टेल मी चैट बॉक्स? 11। अब ये कितना हो गया, कस्टमर कितना हो गया, 1,210, करेक्ट। अब बताइए मेरा कि मेरे पास 1,210 कस्टमर हैं और मेरा 10% एवरेज बढ़ गया 22,000, तो टोटल सेल अमाउंट कितना हुआ, 2,66,000, 2,66,000। सो फार सो गुड। अब मैंने 22% प्रॉफिट मार्जिन किया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 58,56,400। इज मेकिंग सेंस एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर? ओके। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अपने करंट कस्टमर से कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज कर दिया। हम क्या किए, हम नए कस्टमर के पास नहीं दौड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, थोड़ा मुझे ईमानदारी से बताइएगा। अब आप देखिए, सिंपल सा मैथ्स किया हमने, और हमारा जो सेल है, सेल 33% इंक्रीज हो गया,
और प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज हो गया? 46%। मेक सेंस? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पास मान लेते हैं 100 कस्टमर है, आपके पास 100 कस्टमर है, आप मुझे बताइए कि क्या आप 100 कस्टमर के साथ 100% या 80% तक उससे ऑर्डर खींच पा रहे हैं? कि जो उसकी पोटेंशियल है, उसकी पोटेंशियल का 100% खींच पा रहे हैं? आपको बताता हूं मैं आपको, 99.9% केसेस में आप नहीं खींच पा रहे होंगे। और जो आदमी बोल रहा होगा हाँ खींच पा रहे हैं, तो उसको अगर हम मैथ्स दिखाएंगे तो भी बोलेगा हाँ मेरे अभी भी स्कोप बाकी है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि जो मेरा कस्टमर बना हुआ है, करंट कस्टमर, उसका मैंने दिल जीता हुआ है कि नहीं दिल जीता हुआ है? वहां पे मेरे पास ट्रस्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? आपको मालूम है बिजनेस में सबसे बड़ी इशू क्या है? बिजनेस में सबसे बड़ी इशू ट्रस्ट की है। ट्रस्ट बनने में ही टाइम लगता है। अब करंट कस्टमर के साथ ट्रस्ट बना हुआ है, दिल मिला हुआ है, the possibility of selling and converting more from them is the highest, कितना बड़ा पॉइंट समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे ये एक्टिविटी करके देखिएगा कि आपका नंबर क्या, आपको कुछ FLB मिलेगा, कुछ LB मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग से मिलेगा। सो आप सब लोग इस रूम में जो बैठे हुए हैं, सब लोग गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं, सब लोग गोल्ड माइन पे बैठे हैं। फर्क सिर्फ ये है, चूंकि गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा गोल्ड माइन कहाँ है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अटैक फर्स्ट। वी आर गोइंग टू अटैक अवर गोल्ड माइन, जिनके साथ हम बिजनेस पहले कर चुके हैं, उनके साथ स्ट्रैटेजी बना के लेकर आएंगे। अगर आप अभी भी कर रहे हो तो उसको और हम इंप्रूव करेंगे। इट मेक सेंस? अब सोचिए कि अगर मैं अपनी एवरेज सेल को अमाउंट 50% इंक्रीज कर पाया किसी कारण से, तो गेम पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। यस और नो? कानाव, यस इट वर्क्स, एवरीवेयर इट वर्क्स, एज लॉन्ग एज यू डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स। आपको सिर्फ अपना व्यू पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक्सेलेंट। सो now we get ready for the content you have been looking forward to. And before that, I want all of you to write in your notebook, what is your intention from this training program? In your notebook, you don't write here on the chat box. ध्यान से, आराम से लिखेंगे, what is your intention? Why have you enrolled into this program? Be specific. Don't write like this. मुझे सेल बढ़ानी है, मुझे गवर्नमेंट के ऑर्डर उठाने, मुझे ऐसा करना है। डोंट राइट लाइक दिस, इट्स नॉट दैट। सेल बढ़ानी है, एंड आउटकम है, उसके लिए इश्यू क्या आ रहा है वो लिखो आप, है ना? क्या आपकी इंटेंशन है? आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कोई बात नहीं। सो राइट डाउन योर इंटेंशन। अगर आप अपना इंटेंशन नहीं लिखेंगे और आपको इंटेंशन नहीं पता आपको इस प्रोग्राम से क्या लेना है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज समथिंग एल्स विल हैपन। जो नहीं होना था कुछ और ही हो जाएगा। होगा अच्छा ही, बट हमारा पर्पस है कि वी शुड हैव अ फ्रेमवर्क जिससे कि मैं अपनी सेल को इंक्रीज कर सकूं। इज मेक सेंस? विशाल, आपने कोर्स ज्वाइन किया, इसको लिखो नोटबुक में, बात खत्म हो गई। सो ऋषभ, आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि 50% क्यों नहीं कर पा रहे हो? दिस इज हाउ यू आस्क क्वेश्चन। डोंट आस्क हाउ टू इंक्रीज। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? Thank you, Ankita. You can always listen to me in my recordings, but why have you joined the program? So in your notebook, don't write here. अनिकेत, आपको कोई प्राइवेट क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपको क्वेश्चन पूछना है, वो आंसर मैं करूंगा, स्टूडेंट करेंगे, कोई भी कर देगा। सो एवरीबडी इन योर नोटबुक राइट डाउन।
Everyone done? Awesome. Awesome, awesome, awesome. Very good. Now, I want all of you to write down all of your sales challenge. Be detailed as possible. All of your sales challenge. All of you. 10 challenge, 20 challenge, 30 challenge नोट नवीन अपने किसी पेपर पे लिख लो, लैपटॉप पे लिख लो. Write in your notebook all of your sales challenge. Be detailed as possible as. अंकित आप क्लास में नहीं हो क्या? आप कहीं और हो क्या? आर यू बिजी समवेयर इन फंक्शन? हाँ, एक ही बात को बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? बाकी लोग कैसे समझ रहे हैं? All right, so those who have done it, उनके लिए जो लिख रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे. सर्कल योर क्रोनिक सेल्स चैलेंज. क्रोनिक सेल्स चैलेंज. क्रोनिक का मतलब ये होता है कि अभी हमने यहाँ पर प्रॉब्लम थी, फिर ये ठीक हो गई, फिर दोबारा आ गई, ठीक है, फिर दोबारा आ गई, मतलब ये जा ही नहीं रही है प्रॉब्लम. एग्जाम्पल के लिए, अच्छे सेल्स के लोग नहीं मिलते हैं, पिछले 45 साल से मेरे को नहीं मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, ओके. अच्छे कस्टमर नहीं मिलते हैं, ये तो बस ट्रेंड है इंडस्ट्री का. क्रोनिक, जो कि लगातार आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसको. सो एवरीबडी इज जस्ट सर्कल दैट क्रोनिक सेल्स प्रॉब्लम, एंड दोज हु हैव डन इट, टेक अ फोटो ऑफ इट एंड सेंड दैट ईमेल टू मी लाइक दिस, akshar@gmail.com. my intention and my sales challenge is in the notebook. Okay, all you have to do is just write this, right? That's all. यहाँ पे अपना attachment कर दीजिए, लिख दीजिए जो भी है. So all of you have got 3 minutes. Do it fast. We want to go to the next piece. Now the content is coming which you have been looking for. Okay. Awesome, good job, very well done everyone. जिन्होंने नहीं किया वो बाद में कर दीजिएगा प्लीज. मेक श्योर दैट यू डू दिस. ओके, लेट्स गो. सो जब आपने ये एक्टिविटी की, आई वांट टू नो हाउ आर यू फीलिंग वंस यू हैव रिटन एंड सेंड दैट ईमेल टू मी. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Clarity, good, very good. Free, relieved, good job. Focused, like it will happen. Yes, Partha, light, relax, energetic, bit to do. Okay, very good. Now, the thing which I want you to understand is this: if you want result and outcome, then maintain the rhythm of inhalation and exhalation. Maintain the rhythm of inhalation and exhalation. It is not about right answer, wrong answer, this answer, that answer. What is important is to stop data poisoning.
ट्रस्ट मी, जब भी इरिटेशन आएगा, नफरत शुरू हो जाएगी, तो क्या हो रहा है, एक्सेलेशन नहीं हो रही है, जजर का माइंडसेट आ गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे को आप 7 वीक दे दो, 7 वीक में अगर आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर दिया तो आपने नाम बदल देना, ठीक है। अब कितने लोगों ने यहाँ पे सेल्स की चैलेंज लिखी और क्रोनिक सेल्स को टिक मार्क किया, लिखा कि भाई ये क्रोनिक है मेरी, किया आप लोगों ने? एवरीवन, टुडे आई वांट टू गिव यू अनदर एलपी। कोई भी प्रॉब्लम, सेल्स की प्रॉब्लम हो, लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो या पैसे की प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, उसके 2 मेन रीजन होते हैं। परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। पहला 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 कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का राइट नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास मान लो प्रॉब्लम है और आपके पास उसका राइट नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बैंडेड वाली एक्टिविटी करोगे, बैंडेड चिपकाते रहोगे, एक बैंडेड, दूसरा बैंडेड, तीसरा बैंडेड, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फुली एंड कंप्लीटली। ओके, सो लैक ऑफ राइट नॉलेज। अब ये जो प्रोग्राम है, दूसरा है नो और स्लॉपी इंप्लीमेंटेशन। कहने का मतलब है कि मेरे पास नॉलेज तो सही आ गई, बट मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, या पूरा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्लास में बैठा हूँ बट पूरा नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है। किसी को टोन पसंद नहीं है, किसी को तरीका पसंद नहीं है, बट वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, दोज थिंग्स। ओके, सो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू गिव यू राइट नॉलेज। एंड हाउ डू आई नो दैट दिस इज द राइट नॉलेज? द रीजन इज hundreds after hundreds and thousands of business owners have reported that this works in their business. This works in their business. So there is no question about it. Anything which I will tell you, share with you and ask you has got a meaning and works. ठीक है। जब हम यूएससी लाइव में मिलेंगे इन पर्सन, तो आपको और भी चीज पता लगेगी, ओहो मेरा व्यू पॉइंट कैसे फिक्स था। दूसरी चीज कि आप बोलो कि हाँ जी राइट नॉलेज तो मुझे मिल गई है। अब रीजन ये है कि कोई भी आदमी पूरा इंप्लीमेंटेशन दिल से क्यों नहीं करता, उसके 2 रीजन है। पहला, उसको ना बिजनेस में क्लैरिटी नहीं है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, जाना कहाँ है। वो इस बात पे ही अटका हुआ है कि क्या मैं ये बिजनेस करूं कि नहीं करूं, और 25,000 करोड़ का टर्नओवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या लाइफ का पर्पस क्या है, वो वहीं पे फंसा हुआ है। तो अगर क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आपके पास 2 रोड्स हैं, मान लीजिए ये रोड्स हैं आपके पास, तो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, या खड़े रहेंगे? सो हमेशा की हमेशा आप उसी जगह पे खड़े रहेंगे जहां पर आप हैं, क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी तो है बट अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। आप चैट बॉक्स में लिखना मत, बट मैं आपको बताता हूं कि हम सब लोग ना अपने लाइफ में इंफीरियोरिटी और किसी न किसी फियर के पैच से गुजर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे लाइफ में, वो हमारी सर्टेनिटी छीन लेता है। जब हमारी सर्टेनिटी छीन लेता है तो हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है इंप्लीमेंट करने से, आधा अधूरा कर लिया, बाकी तो अक्षर के झोले में डाल दिया, उसने नहीं किया तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा। इज मेकिंग सेंस एवरीवन? ठीक है। दूसरा है कि लेट्स से यू गेट द क्लैरिटी बाय डेवलपिंग, इंप्रूविंग योर व्यू पॉइंट, और बाय गोइंग थ्रू दिस प्रोग्राम एंड सिमिलर प्रोग्राम्स, यू गेट द क्लैरिटी। ओके, दूसरा पॉइंट है जो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वो है कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। अब सवाल आ गया विलिंगनेस के ऊपर। किस पे आ गया सवाल? विलिंगनेस के ऊपर। दे डोंट वांट टू इंप्लीमेंट, करना नहीं चाहते। मैं क्लास में आऊंगा ही नहीं, मैं वीडियो खोलूंगा ही नहीं, विलिंगनेस इशू है। जब भी किसी भी तरीके का विलिंगनेस इशू आएगा, इसका मतलब क्या है कि मन के अंदर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि आपका एक कोई बिजनेस पार्टनर है। ये बिजनेस पार्टनर आपका ब्रदर भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं। आप मान लो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो एग्जांपल के लिए, और आपका पार्टनर कहता है मुझे पीस चाहिए, उदाहरण के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज आपकी मानता नहीं है, सुनता नहीं है, और आप इसकी बातें नहीं सुनते हो, तो क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आप एक ही बात बोलोगे, भाड़ में गया, सब कुछ देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। इसमें की सेंस कितनों की बात से रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए किसी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मैकेनिकल रिलेशनशिप हो गया, हाँ आ गया, ठीक है, ये पैसा, ये दुनिया है, लाइफ, खत्म बात। ठीक है, तो अब जो है स्पाउस से नहीं बनती है, या कोई चीटिंग की फीलिंग है, कोई हर्ट की फीलिंग है, तो क्या होगा? इंसान अपना फुल ऑन अलाइवनेस, अपना विलिंगनेस पूरे काम में नहीं डालेगा। दैट्स व्हाई इंप्लीमेंटेशन वो करना ही नहीं चाहेगा। कितने लोगों को लाइट बल्ब मोमेंट मिला इस बात से? ठीक है, अब अपनी नोटबुक पे आई वांट टू राइट डाउन द इनर कॉन्फ्लिक्ट यू आर गोइंग थ्रू इन योर बिजनेस एंड ऑल्सो इन योर लाइफ। एग्जाम्पल के लिए कि मैं ना जानता हूं कि ये बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, समझना बात को, या मार्जिन नहीं है, या स्कोप नहीं है,
बट ये मेरी पुश्तैनी 50 साल या 100 साल पुरानी कंपनी है, मैं छोड़ भी नहीं सकता। इसके अंदर इशू ये है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे मालूम है कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मौत के मुंह जाऊंगा, अब मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। आपको मालूम है कि आप दूसरे जगह कुछ और करोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, परस्यू करोगे, तो 2 से 5 साल में इंडस्ट्री के लीडर बन सकते हो, यू नो दिस। बट कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया तो क्या होगा, फिर से फिक्सेशन आ जाएगी और मूवमेंट नहीं होगी। सो ऑल ऑफ यू इन योर नोटबुक राइट डाउन द कॉन्फ्लिक्ट यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ. Think about all the conflict you have, all the conflict. It can be related to your spouse, your business partner, your employees, your HR operation, your teacher, your course, anybody. Just write down the conflicts you have, doubts, usko aap bol sakte ho. All of you, please write down in your notebook, okay? हाँ विशाल, आपको करना है, इट्स अ डीप वर्क, ठीक है। Now I want to offer this, which I don't offer to everyone. I want you to, sir, high involving is a conflict. अंकित आप देखो, आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है, समझो ऐसे अंकित, कि आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी स्पीड मान लो 100 की है, बट कॉन्फ्लिक्ट के कारण स्पीड 50 की रह गई है, 20 की रह गई है, 10 की रह गई है, 15 की रह गई है। Okay. So what I was saying is this is your choice. This is not an activity which I want all of you to do. It's your willingness. If you are going through in a conflict in your life, in a conflict, okay, if you want to share that with me, which I can resolve during the program through example and stories, I'm not going to talk to you on that. You can send that conflict also through mail, and that will remain private between you and me. Okay, it's your choice. You can do it now, you can do it later on, you can do it tomorrow, your choice. Does it make sense? All of you? Good, Gaurav. So you can do that. Awesome. So let's move forward. So I want to share three stories from my life. And these three stories have got deepest impact on my entrepreneur journey. Because of these stories, because of these lessons, my life changed. I am able to do what I am able to do today because of these experiences only. So I was doing job. मैं नौकरी करता था और मेरा एक सपना था कि हम कभी जिंदगी में बड़े आदमी बनेंगे। तो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की बिजनेस शुरू की और मैंने देखा कि फेसबुक जो है ना, रातों रात चमका और कुछ चमका, तो बड़ा आदमी बनने के सपने को लेते हुए मैंने बोला हम भी कुछ करेंगे। तो मैंने mitwa.com, आई थिंक 2007 में या 6 में शुरू की या 8 में शुरू की, mitwa.com शुरू की, एक वेबसाइट बनाई जो कि फेसबुक की तरफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी हिंदी भाषी के लिए, जो कि उस टाइम पे फेसबुक पे हिंदी लिखने का प्रावधान नहीं था, ठीक है। सो mitwa.com मैंने बनाई और उसको मैंने अपने पैसे से, पिताजी से 30-35 हजार रुपए लेके बनाई, और उस टाइम पे 35 हजार बहुत होते थे बाय द वे। और जब बनाई तो 2-3 महीनों में चमक गया, नाम हो गया, अरे कोई आ गया बाजार में, ओहो ब्यूटीफुल, बहुत अप्रिसिएशन मिला और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी की। उसी में किसी टाइम्स ग्रुप के किसी बंदे का फोन आया, उन्होंने बोला कि mitwa.com हमें बेच दो। तो मैंने बोला नहीं भाई, इतना तो हम इसको तो हम बड़ा करेंगे और $1 मिलियन में बेचेंगे, ऐसा बेचेंगे। तो उसने समझाने की मुझे कोशिश की कि बॉस, ये तो हम जो बनाया है, ये तो हम रातों रात में खींच के बना देंगे, सिंस यू हैव डन द एफर्ट, यू गिव इट टू अस एंड टेक सम प्रीमियम मनी। सो बात आई गई, खत्म हो गई। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये प्रोजेक्ट 4 महीने में फेल हो गया, पूरा का पूरा फेल हो गया, ये कहीं नहीं हुआ। आई कुड नॉट मोनेटाइज इट। The reason was I failed in marketing the project. मैं अपने वेबसाइट से, अपने प्रोडक्ट से इतना अटैच था कि मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगली बार हमने एक रणनीति निकाली और मैंने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम था indianewspost.com। इस बार वो गलतियां नहीं की जो mitwa.com के टाइम पे की। ये प्रोजेक्ट 9 महीने चला।
हमने 2-4 रुपए 5 रुपए कमाए भी, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे को .com के वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से नहीं थी। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा क्या हुआ, फेल हो गया। इस पूरे जर्नी में मुझे समझ में आया कि बॉस कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुझको खुद अपने हाथों से कर सकता है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के रिलायबल नहीं है। तो मैंने तीसरा .com शुरू किया, उसका नाम था Biz02 बिजनेस को ऑक्सीजन देने वाली कंपनी, है ना। इसमें हमने क्या किया था कि किसी भी बिजनेस ओनर को कोई भी काम करना है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके छोटे छोटे पैकेज बना दिए, जैसे कि मेरे को लोगो में ये रंग बदलना है, जैसे कि सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, जैसे कि यूट्यूब का कवर पेज बनाना है। हमने क्या किया, सारे एक्शंस को तोड़ दिया और उसके पैकेज बना दिए 200 500 800 1000 रुपए के, और वो पैकेज खरीदो और हम आपको 45 मिनट में डिलीवर कर देंगे। हमने इस प्रोजेक्ट से पैसे बनाए, हमने इस प्रोजेक्ट से पैसे बनाए और ये प्रोजेक्ट चला भी, लेकिन इवेंचुअली ये भी फेल हो गया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने कुछ सीखा और वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो आपके लिए FLB LB होगा। द लेसन विच आई लर्न वॉज, द नंबर वन मिस्टेक आई डिड वॉज आई एज्यूम्ड। मैं हर चीज एज्यूम करता चला गया, एज्यूम अपने मन में। आई एज्यूम व्हाट आई थिंक और फील कुड बी द प्रॉब्लम ऑफ ए मार्केट, यानी कि मेरे मन में मुझको जो भी अच्छा लगता था, मैं सोचता था कि मेरे कस्टमर को भी वही अच्छा लगेगा, उसकी भी वही जरूरत है, उसकी भी नीड वही है, ठीक है। सो I was trying to sell something which was not much needed. So the big lesson which I learned was do not assume, ask and validate. ये सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इसको समझोगे तो। आप मार्केटिंग में, अपने बिजनेस में कोई भी चीज एजम्पशन से करोगे तो फंसोगे, लेकिन आप मार्केट से पूछोगे बॉस ये प्रोडक्ट खरीदोगे, ये लोगे, ये चलेगा, ये रंग चलेगा, ये मैकेनिक्स चलेगा, you got to validate. So when you will come with an exercise, I'm going to ask you to go and validate with your potential customers or customers. How to do that, I will tell you. But if you ask me कि सर ये बताओ चलेगा बाजार में, अरे मुझे नहीं बताने चलेगा ना आपके ट्रेड के बारे में, मुझे तो ये मालूम है कि कस्टमर बाय कैसे करता है, वो बताऊंगा मैं आपको, और कस्टमर बाय करेगा नहीं करेगा उससे पूछेंगे, फिर फीडबैक लेके आएंगे। इज मेकिंग सेंस? So the more you go out, the more validation you get from the market, the better the result you will have in your pocket. Is it making sense to you guys? Everyone? Yes. अब मुझे एक बात बताओ, इस कोड को पढ़ते हैं पहले। So all of you, this is the code you might like to take a print out and put it on your wall and read it couple of times. शायद एक बार में समझ में नहीं आएगा। Detach yourself from product or service. आप जो भी काम करते हो उस प्रोडक्ट और सर्विस से इमोशनली डिटैच हो जाओ। और अगर आपको इमोशनली अटैच होना है तो कस्टमर की नीड को और डिजायर को, कस्टमर की नीड को और डिजायर को समझना पड़ेगा आपको। दैट्स ऑल। उसी से आपको अटैच होना है, अपने प्रोडक्ट से नहीं होना है। यू हैव टू किल योर प्रोडक्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन किल्स। यू हैव टू किल योर ओन प्रोडक्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन किल्स, and you have to see what is needed by your customer, and you have to innovate and bring that product before your competition can bring. Is making sense to you guys, all of you? Yeah. Yes. Thank you. एक एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अपने जिंदगी में से दो एग्जाम्पल निकालिए जहां पे, आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, जहां पे आपने कोई भी चीज अपने एजम्पशन पे की थी। मान लीजिए आपने बैटरी के बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगा दिए, जबकि बैटरी के बिजनेस में आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपने लगा दिया। तो कोई भी चीज आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया, बिकॉज गुप्ता जी को प्रॉपर्टी में पैसा हुआ। सो कोई भी चीज आपने शुरू की हो बिजनेस में अपने एजम्पशन से, आप बताइए दो एग्जांपल्स, किया है कि नहीं किया? ठीक है, जो भी आपने एजम्पशन से किया है उससे आपका नुकसान क्या हुआ? समय का नुकसान, पैसे का नुकसान, क्या नुकसान हुआ है ना? क्यों हुआ मालूम है? इसलिए नहीं कि आपके पास सेल्स की टीम की इशू थी, आपका ऑपरेशन नहीं सेट था, इसलिए नहीं था कि सीए खराब था, नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोडक्ट को, एक ऐसी चीज को बेच रहे थे और होप से बेच रहे थे, अरे बिकेगा ना। जरूरी नहीं है कि पर्सन एक्स ने रियल स्टेट बिजनेस में पैसा अगर बना लिया है तो आप भी बना पाओगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस? ओके। कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमने नहीं किया, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने किसी को देखा जिसने ऐसा किया हो, कि एजम्पशन के बेस पे उसने कुछ चालू किया हो? एवरीबॉडी?
वेरी गुड. सो आज के तीसरा चौथा जो लेसन है जो आपको जो मिला, उसमें समझना ये है कि अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आप एजम्पशन पे नहीं खेलोगे. एजम्पशन पे नहीं खेलोगे. आप क्या करोगे? वैलिडेट कर लोगे. यस और नो? मेक सेंस? वैलिडेट कर लोगे. ओके, गुड, वंडरफुल. लेट्स गो. बाजार में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर 15,000 से भी ज्यादा किताबें हैं. 15,000 से भी ज्यादा किताबें हैं. बट आप आए दिन आप देखोगे ये 3 तरह की किताब बार बार आपको शेल्फ पे दिखाई देगी. मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताना, क्या ये 15,000 किताब में से कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो कि अच्छी एडवाइस दे सकती है इनके अलावा जो ये दे रही हैं? हम क्या ये कह रहे हैं कि ये सारी 15,000 की किताबें, इसमें जो एडवाइस हैं वो इनसे बेटर नहीं है? या ये तीन किताब ही बेटर एडवाइस दे रही है? एवरीवन चैट बॉक्स प्लीज. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि इन 15,000 किताबों में से भी देयर आर बुक्स व्हिच कैन गिव यू मच बेटर एडवाइस देन दीज बुक्स. यस और नो? But my question is, why these books are popular? Why these books are sold more than these 15,000 books? Okay. And this is the biggest FLB which I want to take today is because इस book को अगर आप देखोगे तो हर जगह पे लिखा हुआ है बेस्ट सेलर. So it says best seller personal finance book of all times. New York Times bestseller, Wall Street Journal bestseller, बिजनेस वीक बेस्टसेलर, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर. आपको यहाँ पे ध्यान से नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी ने नहीं बोला बेस्ट बुक, किसी ने नहीं बोला बेस्ट ऑथर, किसी ने नहीं बोला, सबने बोला बेस्ट सेलिंग बुक. इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? द इंपॉर्टेंट लेसन व्हिच आई वांट टू कैरी टुडे इज बेस्ट सेलिंग ऑथर gets paid more than best writing author. Best selling author gets paid more than best writing author. और यहाँ पे बेस्ट सेलिंग ऑथर को हटा के कर दीजिए, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आर दे गेट पेड मोर देन द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स. इसको समझिएगा बात, ठीक है? सो क्या था इनके अंदर, इन ऑथर के भी अंदर, जिसके कारण ये बेस्ट सेलिंग कर पाए? ये इसलिए कर पाए, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट मार्केटियर्स. ऑल ऑफ देम आर ग्रेट मार्केटियर्स. शब्द को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि ऑल ऑफ देम वर ग्रेट सेल्समैन और सेल्स पर्सन, दे वर ग्रेट मार्केटियर्स. डू अंडरस्टैंड दैट? दे नो हाउ टू पोजिशन देमसेल्फ. दे नो कि मैं अपने आप को कैसे कस्टमर के दिमाग में कैसे घुसूं. दे नो how to position themselves in market. Now it is your turn to be a great marketeer. It is your turn to be great marketeer. Do you understand that? I wanted to ask this question. On a daily basis, when you go to your office, tell me honestly, what are you doing to become the best seller of your industry? What are you doing to become the best seller of your industry? What are you doing on a daily basis? You would realize you are doing nothing. You would be finding yourself either in operation or operation of sales and marketing, but not doing anything to become the best seller. Just think about it. It's a very interesting phenomena. Very interesting phenomena. Does it make sense? Everyone? Beautiful. Okay, good. Tell me, is it same? Is it same? Sales and marketing both are same. Sales and marketing both are same. Okay. So if you say no, if you say it's not same, I want you to tell me what is sales and what is marketing. I want you to tell me what is sales and what is marketing. Market yourself. Market helps increase sales. Okay. Now if you look at the answers, everyone is giving some different answers. तो एक चीज तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, अगर सारे लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो गलत है. Does it make sense?
ठीक है, अब मान लेते हैं कोई ना कोई गलत है, तो जो गलत है तो वो गलत धारणा को लेके चल रहा है बिजनेस में, तो आपको लगता है कि ब्रेक थ्रू मिलेगा उसको? ये सुनो, आपको लगता है ब्रेक थ्रू मिलेगा उसको? ठीक है, चलिए थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। आप बताइए, एड 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 एडर, एडर का मतलब क्या होता है? एडर का मतलब क्या होता है एवरीवन? जो to increase, somebody who is adding. Correct. So now let's see this, let's say this is you and this is your, let's say, friend. Okay, and your friend told you, yesterday I met an adder. What is the response you are going to give with this statement? Yesterday I met an adder. What is the response you are going to give? So what? Exactly what you got. Exactly. Now just see this. Because let's see this. Adder is a small poisonous snake which has got dark zigzag pattern on its back. ठीक है, तो ये एडर है और छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको देखोगे तो बच्चा लगेगा। और एडर की प्रजाति ऐसी है कि जितनी देर में आप एडर वर्ड बोलोगे उतनी देर में वो आपको खा जाएगा, उतनी देर में आपको खा जाएगा। This is the adder. Now tell me, if your friend tells you, yesterday I met an adder, what the response you will give now? Exactly. Now this is what I want to make you understand. अगर मुझे किसी शब्द का अर्थ पूरा क्लियर नहीं होगा तो जो मेरा व्यवहार है, मेरा बिहेवियर है, मेरा अप्रोच है, वो क्या होगा? वो अजीब सा होगा। मेक सेंस? कितने लोगों को हेल्प भी मिला? ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है? ठीक है, कुछ लोगों ने बोला स्नेक है। ठीक है, सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट। गुड, आई लाइक इट, डोंट नो, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अब आप देखो, जब मैं बोल रहा हूं बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर तो किसी ने बोला स्नेक है, बट हमने तो स्नेक यहां पर भी देखा ना। बट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर से मैं मिला तो गेम अलग है ना। हाँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर से मैं मिला तो आपको जान के हैरानी होगी कि बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खाली अगर आपने गले में फंदे बांध दिया तो जो बिगाड़ सकता है वो ये। Is making sense to you? जो बिगाड़ सकता है वो है एडर, ना कि बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको अर्थ नहीं पता होता बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर का, तो आप बोआ से भी डरते, एडर से भी डरते। अब आप जिस चीज से नहीं डरना है उससे भी डर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लिमिटेड पॉइंट बोलेंगे या एक्सपेंडेड व्यू पॉइंट बोलेंगे? Does it make sense to you? So the power principle I want you to understand is this, ladies and gentlemen. Words can have different meanings. One will have some confusion in that area. Does it make sense? जब आपको क्लियर ही नहीं है तो क्या होगा? आपके सामने में कंफ्यूजन है तो आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? छोटा रहेगा, आपका व्यू पॉइंट एक्सपैंड नहीं होगा। ओके, सो व्हेन यू हैव कंफ्यूजन यू वोंट बी एबल टू सी थिंग्स, सी द बेस्ट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर हैं, तो क्या होगा? आप कंफ्यूजन की स्टेट में 100 करोड़ तक पहुंच गए हो, और भगवान का आशीर्वाद है ये।
बट मैं ये कह रहा हूं कि इसके बियॉन्ड अगर आपको पहुंचना है, जो भी नंबर है आपका, वो नंबर पे नहीं जाते अभी कि 1000 करोड़ है या 5 करोड़ है, इसके बियॉन्ड अगर पहुंचना है तो आपको ये कंफ्यूजन को किल करना पड़ेगा। कंफ्यूजन को किल करने के लिए आपको वापस से बताना चाहता हूं, उसी स्लाइड पे लेकर आऊंगा जो कि आप लोगों को, कुछ लोगों को बोरिंग लग रही थी या लग रही है। वो ये है, ऑल ऑफ यू, दैट यू नीड टू वर्क ऑन दी फाउंडेशन, फाउंडेशन। Okay, we will finish in 10-15 minutes, Jitendra. Is this clear, everyone? ठीक है? So the point is, if you don't understand the word fully, you will have confusion. ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सेल्स और सेलिंग दोनों सेम है? सेल्स और सेलिंग सेम है? सेल्स क्या है? सेल्स एक ट्रांजैक्शन है। सेलिंग क्या है? सेलिंग है एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग। मेक सेंस? ओके, गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सबने सेल्स की और मार्केटिंग की थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखी होगी चैट बॉक्स में या अपने कहीं पे, है ना? आपको मैं आज नया डेफिनेशन देता हूं, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, वो जो रामबाण है, वो है आपका जो सीक्वेंस है, वो सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं है, वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। यू डू मार्केटिंग फर्स्ट देन डू सेलिंग, नॉट सेलिंग एंड देन मार्केटिंग। दोनों को लोगों ने आइसोलेशन में ले रखा है। बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नाम पे मेरी ये डिजिटल मार्केटिंग के कंपनी से कोऑर्डिनेट करती है। कितने शौक से बोलते हैं। अगर आप सेल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो 100 रुपए का माल बेचेंगे 1000 रुपए के पंच मार के, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। बट अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो 100 रुपए का माल बेचेंगे 1 रुपए के पंच मार के। इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल। Have you seen Apple, Starbucks, Airtel, VFast, or any successful company? They are their salesmen calling you, "Hey, sir, excuse me, I have launched one iPhone 15. Please buy iPhone 15. Please take iPhone 15." Have you seen that? You have never seen these people coming to you. What they do is they hijack your mind, hijack your emotion in a way that you pre-order things. Does it make sense? So what I'm trying to make you understand is you replace marketing with the word called magnet. Magnet. What we are going to do is that we are going to throw the magnet in the market. My potential customer will come to you, and then the customer, when the customer comes to you because of your magnet, then selling is easy. Give me yes or no. Yes or no? Okay. So now I want to give you the definition of marketing. Because of this definition, my students have gotten 600 crores plus of additional sales. I have grown 400% because of only this definition and this viewpoint. And trust me, it will take time, but the moment you will understand, it will change your life. This definition has got 4 important points. First point, it says presenting your product, service, idea, concept, or thought. Presenting your product, service, idea to potential customer. Presenting your product or service to your potential customer. सबको नहीं बेच रहे, सबको नहीं प्रेजेंट कर रहे, पोटेंशियल कस्टमर को इन सच अ वे, एक स्पेसिफिक तरीके से बेच रहे हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से दिखा रहे हैं, इन सच अ वे टू मेक देम ईगर टू बाय, ईगर टू बाय। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके सेल्स की टीम ने, आपकी मार्केटिंग की टीम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, व्हाट्सएप पे पोस्ट किया, ईमेल किया, या मान लो कॉल किया, अगर उसका जवाब ईगरनेस से सामने से नहीं आ रहा है तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसको मार्केटिंग का ड्रम पीट के बोल रहे हो और बोल रहे हो कि मार्केटिंग वर्क नहीं करती है। It makes sense to you? अगर आप सामने वाले के अंदर ईगरनेस पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल। यस और नो? ठीक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स इस तरीके से अपना बर्गर दिखाएगा, विल यू बाय दिस बर्गर
or will you buy this burger? ये वाला ad चलेगा तो buy करोगे, ये वाला ad चलेगा तो buy करो. Obviously right one, isn't it? So now look at this. इसने क्या किया? इसने क्या किया? Presented burger to you in a very special way to make them eager to buy. Is it clear to you? Will you do business with this guy or versus this guy? Same knowledge. You will always go to the right. Will you do shopping from this place to this place? Same shop. So what I'm trying to make you understand is 4 चीजों को समझने की बहुत जरूरत है मार्केटिंग के अंदर. पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है. अब आते हैं सीक्वेंस में. जब हमने मार्केटिंग कर ली, जबकि हमने अपना मैग्नेट बाजार में दे दिया, तो सामने वाला चल के मेरे पास आया, तो हम क्या करेंगे? सेलिंग. अब मैं आपको सेलिंग की जो परिभाषा है वो एक डिफरेंट परिभाषा देता हूं. सेलिंग इज टेलिंग. आप यहां से इस चीज को ऑपरेट करो. सेलिंग इज टेलिंग. अगर आपको समझ में नहीं आया तो दिस इज द पिक्चर दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड. द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग इज लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड. अगर आप शांति से अपने दिल की बात सामने वाले को नहीं बता पा रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, तो वो सेलिंग नहीं है, कुछ और हो रहा है. Does it make sense? Does it make sense? Okay. So definition of selling is telling somebody का मतलब prospects हुआ यहाँ पे, how your product or service can solve the problem and why your product is good fit for them. That's all. Does it make sense? So always remember, the rule is you do marketing first, then do selling. If you just focus on selling, then it is going to be full of effort. If you do marketing and then do selling, it is going to be effortless. Yes or no? How many of you remember this slide? Remember this? This is our ultimate sales engine. No. This is Ducati's engine. Our ultimate sales engine, which you are going to learn from the next class, all the components of it. This is how it looks like. Now I want to give you a secret. Who wants to know the secret? And let me know if you have understood the secret or not. The secret is, this is the world's first marketing dominated sales engine. This is the first marketing dominated sales engine. ठीक है? हम सीखेंगे अगली क्लासेस में कि इसके अंदर जो मैक्सिमम कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या है? वो मार्केटिंग का कंपोनेंट है. 80% इट इज अ मार्केटिंग कंपोनेंट, 20% सेलिंग कंपोनेंट है. व्हाई डू वी वांट टू डू दैट? बिकॉज अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मैं ज्यादा मार्जिन नहीं ले पाऊंगा. अगर मार्केटिंग के रास्ते से सेलिंग करूंगा तो मैं मार्जिन खींच पाऊंगा. इज मेकिंग सेंस? या ओके. सो द जॉब ऑफ द मार्केटिंग is to make sales effortless or completely eliminate the sales. The job of the marketing. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप जहाज बेचते हो, गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, या पार्ले जी बिस्किट की दुकान लाके बैठे हो, trust me, you will have to understand the concept and adapt to your business. Does it make sense? Everyone? Okay. So now we close today's session. I want all of you to do this activity. First of all, homework. So for this week, there is no specific homework as such. Okay. You have to watch the recording for today's class, and your link will be given to you by Sunday evening or Monday. And then we meet next Wednesday, not this Wednesday, 7 p.m. for recap Q&As with your accountability group, जो कि उस दिन में बताऊंगा. Does it make sense? So before you go, I want you to, in the WhatsApp group, not here in the chat box, I want you to write a story. What has opened up for you? What are the 3 things that you got from today's class? What was the biggest LB moment? 27th नहीं है, 7th है. So 7 p.m. है. Okay. So everybody take your time, do not rush. Write a story in the WhatsApp group, not here. In the WhatsApp group,
what was the biggest FLB, 3 FLBs which you got? What expanded viewpoint you have got from today's class? Okay, so write slowly, and after that we close today's session, ladies and gentlemen. So unlock, I'm going to do that. Everybody please do that right now. That's your exhalation. That's your exhalation. Everybody please do that in the WhatsApp group right now. Full exhalation right now, okay? Full exhalation right now. And I'm going to read, because your writing is my inhalation. Your writing is my inhalation. So we are closing today's session. I want to thank you for being an amazing student. You have been great student. You kept on learning and sitting here. And I will see you next Saturday, and then we begin on the content part. Till the time, you please write what was the biggest FLB you have, because your writing is going to be my inhalation. Okay, I'm going to read everything which you are writing. So thank you guys. Do it now. If you don't do it now, you won't be able to do it. Sukhjot, please connect with Payal. She will do that. What was the 3 things which you got from today's class? What was the biggest FLB, LB for you? You know what? I want to tell you that we have got mixed breed of people in this group, wonderful people. I want all of you to maintain this group energy. FLB means freaking light bulb moment. Yes, Siddharth, you can leave once you are done. That's the last exhalation. So guys, thank you very much. और आने वाले सेशंस में हम बातचीत भी करेंगे. I will be switching on your videos and audios also. We'll talk, we'll have conversation.